बैठे हुए आराम से, be happy. सुखी होइए फिर भी, Don't worry. चिंता मत कीजिए। You can be happy here, no problem. आप यहाँ सुखी रह सकते हैं, कोई समस्या नहीं। It's allowed. यहाँ पे अनुमति है आपको सुखी रहने के लिए। It's supposed to be joyfully performed. होना चाहिए, आनंद से इसको करना चाहिए। If you want to be miserable, you can't stay here. अगर आप कष्ट में रहना चाहते हैं तो आप यहाँ नहीं रह सकते। So, are we ready to continue our discussion about desires? तो क्या हम अपनी चर्चा करने के लिए जारी रख सकते हैं इच्छाओं के ऊपर? Pure desires, hopefully. और शुद्ध इच्छाएं, आशा है। All right, let's see what mercy we can get. चलिए देखते हैं हम क्या कृपा पा सकते हैं। Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sangha Jaya Bhaktivedanta. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sangha Jaya Bhaktivedanta. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sangha Jaya Bhaktivedanta. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sangha Jaya Bhaktivedanta. All right, so we're going to read from Sri Chaitanya Charitamrita. हम श्री चैतन्य चरितामृत से पढ़ने वाले हैं। Madhya Lila. मध्य लीला। Where was my friend? Wasn't he complaining? We're not talking about Mahaprabhu. हमारे मित्र कहाँ गए? वो हमें शिकायत कर रहे थे, हम महाप्रभु के बारे में बातें नहीं कर रहे। Didn't he have a special request? उनका एक विशेष अनुग्रह था। Right? We studied everything for him. हमने Right? पूरा पढ़ाई की उनके We लिए। want to answer all his questions. और उनके सारे प्रश्न का हम उत्तर देना चाहते हैं। Quote from Chaitanya Charitamrita. और चैतन्य चरितामृत से ही हम बातें बताने वाले थे। Because he had this sincere desire to hear about Mahaprabhu. क्योंकि उनकी एक निश्चित इच्छा थी महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए। And now Mahaprabhu fulfilling his और desire. अब महाप्रभु उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। And he didn't even come. और वो आए तक नहीं। I guess he was asking for our benefits. मुझे लगता है शायद हम हमारे I फायदे के don't लिए think of any other reason. और कोई अन्य कारण ही नहीं। Yeah, this is for you. Make you look beautiful. आपको थोड़ा सुंदर दिखाने के लिए। More beautiful, excuse me. क्षमा कीजिएगा मुझे। No offense. बुरा मत मानिएगा। Yeah, so we're going to read Madhya Lila chapter 19. तो मध्य लीला अध्याय 19 से हम He's still thinking about how beautiful he is. अभी भी सोच रहे हैं कितने सुंदर है। He's praying to be humble, you know. विनम्र रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। So we're reading Madhya Lila chapter 19. तो मध्य लीला अध्याय 19 से हम पढ़ रहे हैं। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु instructs Srila Rupa Goswami. उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को निर्देश दिए। And this is a very nice verse. ये बहुत अच्छा श्लोक है।
Too bad he's not here. और बहुत बुरी बात है कि वो यहाँ मौजूद नहीं है। I think he was mad at me because I said don't sit against the wall. मुझे लगता है वो मुझसे गुस्सा हुए थे क्योंकि मैंने उनको कहा था कि दीवार से सट कर मत बैठिए। Then he boycotted the class. तो वो क्लास ही छोड़कर चले गए। And then he was telling everyone, I want to get an Indian guru. और फिर वो सबको जाके बता रहे थे मुझे एक भारतीय गुरु चाहिए। So I said, wow, I just asked him not to fall asleep across the wall and now he needs an Indian guru. मैं तो चौंक गया कि मैंने उनको कहा कि दीवार से सट कर मत बैठिए तो वो भारतीय गुरु ढूंढने चले गए। Okay, no problem. If that's what you want, Krishna will give you. अगर आप वही चाहते हैं तो कृष्ण आपको वो देंगे। To fulfill all your desires. कृष्ण आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। So this is verse 149. तो श्लोक संख्या 49। And this is a continuation of the discussion where Krishna is talking about and Prabhupada about desires. और ये हमारी चर्चा आगे हम जारी रखेंगे जहाँ प्रभुपाद इच्छाओं के बारे में बता रहे थे। It says Krishna Bhakta Niskama Ata Eva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kāmī Sakale Ashanta. Translation Prabhupada. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का। Let's do the word for word. चलिए श्लोक शब्द अनुवाद Just so you can focus in. ताकि आप लोग ध्यान लगा सकें। Krishna Bhakta Niskama Ata-eva Shanta Bhukti Mukti Siddhi Kāmī Sakale Ashanta. Krishna Bhakta, a devotee of Lord Kṛṣna. भगवान श्री कृष्ण का भक्त। Nishkama, actually desireless. निष्काम, Ata-eva, therefore. इसलिए Shanta, peaceful. शांत रहता है। Bhukti, of material enjoyment. भौतिक इंद्रिय भोग। Mukti, of liberation. मुक्ति का From material activities. भौतिक कार्यकलापों से। Siddhi, of perfection in yogic performance. योगाभ्यास में सिद्धियां। Kāmī, those who are desirous. जिनके अंदर इच्छाएं होती हैं। Sakale, all of them. सभी Ashanta, not peaceful. अशांत रहते हैं। Translation Purport by Srila Prabhupada. अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का। Because a pure devotee of Lord Kṛṣna is desireless, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त इच्छा हीन होते हैं, he is therefore peaceful. इसीलिए वो शांत रहते हैं। Fruitive workers desire material enjoyment. कर्मी कुछ भौतिक इंद्रिय भोग करना चाहते हैं। Kāmīs want material enjoyment. कर्मी भौतिक भोग करना चाहते हैं। Jñānīs, they desire liberation. ज्ञानी मुक्ति पाना चाहते हैं। The Yogīs desire material opulence. और योगी भौतिक ऐश्वर्य पाना चाहते हैं। Therefore, they are all lusty इसीलिए सभी के भीतर काम है and cannot be peaceful nor satisfied. और ना वो शांत रह सकते हैं ना संतुष्ट रह सकते हैं। Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य। The pure devotee of Lord Kṛṣna has no desire other than serving Krishna. कृष्णा के शुद्ध भक्त के अंदर कृष्णा को सेवा करने के बजाय कोई इच्छा नहीं होती। Even so-called liberated people are full of desires. यहाँ तक कि नाम मात्र के मुक्त लोग भी बहुत सारी इच्छाओं से भरे होते हैं। Fruitive actors desire better living accommodations. कर्मी लोग ज्यादा बेहतर आरामदायक स्थिति की तलाश करते रहते हैं। And jñānīs, they want to be one with the Supreme. और ज्ञानी परम के साथ विलीन होना चाहते हैं। Yogīs desire material opulence. और योगी भौतिक ऐश्वर्य पाना चाहते हैं। Yogic perfections. योगिक सिद्धियां पाना चाहते हैं। And magic. और जादू करना चाहते हैं। All of these non-devotees और ये सारे अभक्त are lusty, kāmī. के भीतर काम होता है।
because they desire something, क्योंकि उनके भीतर कोई इच्छाएं हैं, they cannot have peace. इसीलिए वो कभी शांत नहीं रह पाते। The peace formula is given by Krishna in the Bhagavad Gita. और शांति का सूत्र भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दिया है। 5:29. 5:29 Bhoktaram Jagdatapasam Savaloka Maheshwaram Suridam Savabhutanam Gyatva Mam Shantim Richati. One who simply understands जो केवल इस बात को समझता है that throughout the entire universe कि पूरे ब्रह्मांड में Krishna is the supreme enjoyer कृष्णा परम भोग करता है and beneficiary of all kinds of sacrifices, और सारे यज्ञों के वो लाभ वो ग्रहण करते हैं, penances and austerities, और तपस्या और प्रायश्चित, which should be performed only to attain his pure devotional service. तो ये सारी चीजें करनी चाहिए केवल भगवान की शुद्ध भक्ति को पाने के लिए। That Krishna is the supreme being, कि कृष्णा एक परम पुरुष है and thus he's the proprietor of all the material worlds, और इसलिए ये सारे भौतिक जगतों के मालिक हैं, and that Krishna is the only well-wishing friend और कृष्णा ही केवल एकमात्र शुभचिंतक मित्र हैं who can actually do good to all living entities. जो असल में जीवात्माओं के लिए लाभ कर सकते हैं। Suridam Savabhutanam. One who factually understands these three principles तो जो तत्व में इन तीन सिद्धांतों को समझ पाता है about Krishna कृष्णा के बारे में, immediately becomes और desireless, तुरंत ही वो इच्छाहीन हो जाता है, nishkama, निष्काम हो जाता and है, therefore becomes peaceful. और इसीलिए वो शांत हो जाते हैं। A Krishna Bhakta knows that his friend and protector in all respects is Krishna. और कृष्ण भक्त जानते हैं उनके मित्र और उनके रक्षणकर्ता सभी समय केवल कृष्ण है, Who is able to do anything for his devotee. वो अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। Krishna says, Kunteya patijanahi name bhakta pranashati, from the 9th chapter, 31st verse Bhagavad Gita. भगवद गीता 9 अध्याय 31वें नंबर श्लोक में कृष्ण ने इस बात की पुष्टि की है। Krishna says to Arjuna, O son of Kunti, declare it boldly कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती पुत्र, घोषणा करो that my devotee never perishes. कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। And since Krishna gives this assurance, और क्योंकि कृष्ण ये सुनिश्चितता दे रहे हैं, the devotee lives in Krishna क्योंकि भक्त कृष्ण में रहता है and has no desire for personal benefits. और उनके व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई इच्छा नहीं होती उनके अंदर। The background for the devotee is the all good himself. और भक्त का So who's behind everything, who's backing, is the Lord himself. तो उनके पीछे जो भी उनको हमेशा साथ देते हैं वो है भगवान स्वयं। So why should the devotee aspire for something that he thinks will be good for himself? तो भक्त कोई भी ऐसी चीजें क्यों इच्छा करेगा जो उनके लिए अच्छी ना हो। So his only business is to please the Supreme by rendering as much service as possible. और उनका एक ही मात्र कार्य होता है कैसे मैं परम भगवान को संतुष्ट करूं, जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा। A Krishna Bhakta has no desire for his own personal benefit. कृष्ण भक्त के स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई इच्छा नहीं होती। He is completely protected by the Supreme. और पूरी तरह से भगवान उनकी रक्षा करते हैं। Avasya Rakshibe Krishna Vishvas Halana. Bhaktivedanta.Thakur says श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने ये बात भी कही है that he is desireless because Krishna will give him protection in all circumstances. उनको कोई इच्छा नहीं होती क्योंकि उनको पता है कृष्णा उनको सभी परिस्थितियों में उनकी रक्षा करेंगे। It is not that he expects any assistance from Krishna. ऐसा नहीं है कि वो भगवान से किसी मदद की अपेक्षा करते हैं, He simply depends on Krishna. वो केवल कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते हैं। Just as a child depends on his parents. जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। The child does not know how to expect service from his parents. बच्चे को ये नहीं पता होता कि उसके माता पिता से कैसे उनसे सेवा की अपेक्षा करनी है, But he's always protected nonetheless. लेकिन फिर भी उनके माता पिता सदैव उनकी रक्षा करते हैं। This is called nishkama or desirelessness. इसको कहते हैं निष्काम या इच्छाहीन होना। Although karmis, jñānīs and yogis fulfill their desires by performing various activities, यद्यपि कर्मी ज्ञानी योगी अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं अनेक अनेक कार्यों को करकर,
they are never satisfied. वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। A karmi may work very hard to acquire millions of dollars. तो कर्मी कड़ी मेहनत कर सकता है करोड़ों रुपए जमा करने के लिए। But as soon as he gets $1 million, he desires another million. तो जैसे उसको करोड़ रुपए मिलते हैं, तो फिर वो और 1 करोड़ पाने की इच्छा करता है। For the karmis, there is no end of desire. कर्मियों के लिए इच्छा का कोई अंत ही नहीं होता। The more the karmi gets, the more he desires. जितना ज्यादा कर्मी पाता है, उतना ज्यादा उसकी इच्छा बढ़ने लगती है। The jñānīs, they cannot be desireless. और ज्ञानी भी इच्छाहीन नहीं हो पाते हैं। Because their intelligence is unsound. क्योंकि उनकी बुद्धि सही नहीं होती। They want to merge into the Brahman effulgence. वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। But even though they may be raised to that platform, और यहाँ तक कि हो सकता है वो उस स्तर तक उठ भी जाएं, because it is not permanent, क्योंकि वो स्थायी जगह नहीं है, they cannot be satisfied there. वो वहाँ संतुष्ट नहीं रह पाते। There are many jñānīs or sannyasis who, after taking sannyas, they give up the world and consider it false. तो बहुत सारे ज्ञानी सन्यासी ने इस जगत को त्याग करके इस जगत को मिथ्या माना। And then they return to the world engaged in politics and philanthropy. और फिर वापस इस जगत में आके वो राजनीति और समाज सेवा कार्य में लग गए। Or to open schools and hospitals. या विद्यालय या अस्पताल उन्हें खोलना शुरू कर दिया। This means that they could not attain the real Brahman. इसका मतलब वो असल ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच The पाए। Brahma Satyam. ब्रह्म सत्य तक। Therefore, they have to come back down to this material और platform इसीलिए उन्हें वापस इस भौतिक स्तर में आना पड़ा। to engage in such philanthropic activities. इस तरह के समाज सेवा में लगने के लिए। Thus, they again cultivate desires. और फिर उन्होंने इच्छा और उन्होंने उत्पन्न की। And when these desires are exhausted, then they desire something different. और जब वो अपनी इच्छाओं से थक गए, तो फिर और दूसरी इच्छा उन्हें करना शुरू कर दिया। Therefore, jñānīs cannot be niskama or desireless. इसलिए ज्ञानी कभी भी निष्काम या इच्छाहीन नहीं हो सकते। Nor can the yogis be desireless, और ना ही कोई योगी इच्छाहीन हो सकता है, for they desire yogic perfection क्योंकि वो योगिक सिद्धि पाना चाहते हैं, in order to exhibit some magical feats ताकि कुछ जादुई कारनामे कर सकें and to gain some cheap popularity. और कोई सस्ता प्रसिद्धि पा सकें। People gather around these yogis, लोग ऐसे योगियों के चारों ओर जमा होते हैं, and then the yogis desire more and more adulation or glorification. और फिर योगी की इच्छा और ज्यादा बढ़ने लगती है, कैसे और ज्यादा उनका गुणगान हो सके। And because they misuse their mystic power, और क्योंकि वो अपनी योगिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं, they fall down again to the material platform. और वो भी फिर इस भौतिक जगत में भौतिक स्तर में गिर जाते It हैं। is not possible for them तो उनके लिए संभव नहीं है to become niskama or desireless. या इच्छाहीन हो पाना। The conclusion is तो निष्कर्ष ये निकलता है that only the pure devotees केवल शुद्ध भक्त who are simply satisfied in serving the Lord जो केवल संतुष्ट हैं भगवान की सेवा करके, can actually become desireless. वो असल में इच्छाहीन हो सकते हैं। Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says here, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ बताते हैं Krishna Bhakta Nishkama. कृष्ण भक्त निष्काम। Since the Krishna Bhakta, the devotee of Krishna, is totally satisfied with Krishna, क्योंकि कृष्ण भक्त का पूरी तरह से कृष्ण में ही संतुष्ट रहता है, then there is no possibility of fall down. तो उनके पतन की कोई संभावना नहीं। So in Golok Vrindavan, they're completely satisfied with Krishna. There's no possibility of fall down. तो गोलोक वृंदावन में पूर्ण रूप से कृष्ण से संतुष्ट हैं, तो उनके लिए कोई संभावना नहीं है उनका पतन होने का। Om Jnana Tamarandasha, Gunanjana Shalakaya, Chakshunatam Janatasma, Shri Guru Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Srivasadi Shri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Krishna Bhakta Nishkama Ata Eva Shanta Bhukti Mukti Siddhikami Sakale Ashanta. Translation again. अनुवाद एक बार फिर से। Because the pure devotee of Lord Krishna is desireless, क्योंकि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त इच्छाहीन होते हैं, he is therefore peaceful. इसीलिए वो शांत होते हैं। Fruitive workers desire material enjoyment. और कर्मी भौतिक भोग करना चाहते हैं। Jñānīs desire liberation. ज्ञानी मुक्ति की इच्छा करते हैं।
Yogis desire material opulence. योगी भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं, Therefore they are all lusty इसीलिए सभी के अंदर काम है and therefore cannot be peaceful और इसीलिए वो शांत नहीं रह सकते, nor satisfied. ना संतुष्ट रह सकते हैं। So it's explained that every jiva, every living entity is eternal servant of तो Krishna. बताया गया है सभी जीवात्मा कृष्णा के नित्य दास हैं। So we were created to act as an eternal loving servant for Krishna. तो हमारा निर्माण किया गया है कि हम कृष्णा के नित्य दास के रूप में कार्य कर सकें। That's the very purpose of our being created. यही हमारे सृष्टि का उद्देश्य है। And until we realize that and act on that platform, there can be no real peace and तो happiness. जब तक हम उस स्तर का साक्षात्कार करें और उस साक्षात्कार के साथ कार्य करना शुरू करें, हमें कोई संतुष्टि नहीं मिल सकती। Srila Prabhupada says everyone wants to be happy, श्रील प्रभुपाद बताते हैं सभी सुखी होना but चाहते they हैं, don't know how to be happy. लेकिन उनको पता नहीं है सुखी कैसे होना है। That's why Prabhupada said this peace formula is there that you must understand. Otherwise, you cannot be peaceful. If you're not peaceful, you cannot be happy. इसलिए प्रभुपाद बताते हैं ये शांति का सूत्र है, तो आपको इसको समझने की जरूरत है। अगर आप शांत नहीं हो सकते, आप सुखी नहीं हो सकते। So as long as we are having materialistic desires or lusty desires, तो जब तक हमारे अंदर भौतिक इच्छाएं या काम की इच्छाएं होंगी, therefore there's no peace, इसलिए कोई शांति नहीं there's no होगी, satisfaction, कोई संतुष्टि नहीं होगी and there's no happiness. और कोई सुख भी नहीं होगा। So it's explained that Krishna is only interested in pure loving devotion. तो ऐसा बताया जाता है कृष्ण को केवल शुद्ध भक्ति में रुचि है। It's the only thing that attracts Krishna. एक ही मात्र चीज जो कृष्ण को आकर्षित करती So if है। we don't come in this mood of loving devotional service to the Lord, Krishna is not so pleased, तो अगर हम इस प्रेम भक्ति भाव से कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, तो कृष्ण हमसे सुखी नहीं होंगे and therefore he hides himself from us. और इसीलिए वो हमसे स्वयं को छुपा कर रखते हैं। So Prabhupada says that unless your mind, intelligence and senses are at the lotus feet of the Lord engaged in loving devotional service, तो प्रभुपाद बताते हैं अगर आपकी मन, बुद्धि, इंद्रिय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति में सेवा में नहीं लगी, means surrendering to Rishikesh, यानी कि ऋषिकेश को शरणागत करने में, master of mind and senses. जो मन इंद्रिय के स्वामी हैं। My friend, can you not? Also, I'm just typing your notes. You what? I'm just writing as your notes. He's making notes. Just listen. Okay. All right. आपके पास सुनने का प्रयास That's कीजिए, more important. वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Otherwise, your speed of taking notes is so impressive. I'm losing track of what I'm supposed to say. वरना जितनी तेजी से आप नोट्स बना रहे हैं, मैं इतना उससे प्रभावित हो रहा हूँ कि मैं अपना रास्ता भूल जा रहा हूँ। I remember when I went to Śrīmad-Bhāgavatam.Swami, you know, everyone was writing notes, मुझे याद है जब मैं श्री गौरवंश महाराज के पास गया, तो सभी लोग बैठ के नोट्स बनाते थे and I wasn't. और मैं नहीं बनाता था। And I was looking around and everyone's writing, taking all the information. I'm like, oh, it's like going to school or something. तो मैंने देखा आसपास सभी लोग जो है नोट्स बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं स्कूल में बैठा हूँ। So then I went to the market and after the class I bought a notebook and a nice pen. तो क्लास के बाद मैं fancy phone back then. तो मैं जब उसके बाद क्लास के बाद बाजार में गया, मैंने एक नोटबुक और एक बहुत अच्छा पेन खरीदा। उससे हमारे पास ऐसे अच्छे फोन नहीं हुआ करते। Then I went to Maharaj's class next day. I had a nice notebook, nice pen. अगले दिन महाराज के क्लास में गया, अच्छा नोटबुक, अच्छा पेन लेके। Then Maharaj started speaking. I said Śrīmad-Bhāgavatam, you know, and I have very bad handwriting, you know, and I'm like writing. I'm thinking, oh, this is bad handwriting. I'm trying to write as best as possible. You know. तो फिर मैंने लिखना शुरू किया कि श्रीमद्-भागवतम क्लास डेट डालना शुरू किया। फिर मुझे याद आने लगा कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है। फिर मुझे लगा मेरी हैंडराइटिंग कितनी खराब है, इस तरह से मैं सोचने लगा अपने मन में। So every day before that, I was just listening to Maharaj nicely, trying to. और उसके पहले जब भी मैं जाता था महाराज से, बस के बाद अच्छे से सुनने का प्रयास करता था। All of a sudden, I'm like, oh, you have such bad handwriting. I'm like, didn't they teach you in school? And I mean, I was like lost somewhere. और अचानक से मेरे मन में बातें आने लगी कि मेरी हैंडराइटिंग कितनी खराब है, स्कूल में मैंने ठीक से सीखा नहीं, ये सब बातें मेरे दिमाग में चलने लगी अब। And for like a long time, I'm not writing anything anyway, right? और काफी लंबे समय से मैंने कुछ लिखा भी नहीं था। Then I was like, I can't even read my own writing. मैं खुद का जो है लेख भी पढ़ नहीं पा रहा। So then all of a sudden, in the middle of this meditation, तो अचानक से इस मेरे ध्यान के बीच में I hear Maharaj say, "Hey, what are you doing?" मुझे याद है महाराज ने मुझे कहा, तुम क्या कर रहे हो? And I don't know who he's talking to because I'm too busy trying to write something. और मुझे पता नहीं था महाराज किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि मैं बहुत तेज था, नीचे मैं लिखता जा रहा था नोट। And then I look up and Maharaj is looking right at me. और जब मैंने ऊपर देखा तो महाराज मेरी तरफ देख And I रहे was थे, like kind of shy, you know, because it was like he was focusing on me, you know. क्योंकि सबका ध्यान मेरी तरफ आ गया। Like, what are you doing? तुम कर क्या रहे हो? And I look up and it was like everything silent, Maharaj looking at me. मैंने जब देखा सब शांत है, महाराज मेरी तरफ देख रहे हैं। And I was kind of like saying, without saying anything, I was kind of like just pointing to everyone who's writing in the books, like I'm just doing what the other students are doing. और मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मैं बस दिखाने का प्रयास किया कि बाकी लोग जो कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ जैसे बाकी शिष्य कर रहे हैं। Because I thought that would be a good thing, right? क्योंकि मुझे लगा था ये अच्छा काम कर रहे हैं। And then Maharaj, surprisingly, he said, for you, don't write anything. और आश्चर्य की बात ये है, महाराज ने मुझसे कहा कि तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। He said, you just try to nicely listen to what I'm saying. तुम केवल अच्छे से सुनने का प्रयास करो, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। He said, if you do that, you'll understand everything. अगर तुम बस वो करोगे, तुम सब कुछ समझ जाओगे। So I just shut the book तो मैंने अपना नोटबुक बंद किया and put the pen away. और अपना पेन जो कलम मैंने दूर रख दिया। I never wrote anything down in the class after that. और उसके बाद मैंने क्लास में कभी भी कुछ नहीं लिखा। So then later on, when I was understanding something by His mercy, और बाद में जब उनकी कृपा से मैं चीजों को समझने लगा था थोड़ा, and I was remembering it and realizing it by His mercy, और मुझे मन में स्मरण होने लगा उनकी कृपा से, और मैं उसका साक्षात्कार भी करने लगा। then I could understand my Gurudev saved me from jnana. तब मैं समझ पाया कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान से बचा लिया। You see, because I was inclined to studying and researching and knowledge. You see, I had an attraction for jnana. तो मेरा झुकाव था, थोड़ा आकर्षण था कि अध्ययन करना, कुछ लिखना, पढ़ना और इस तरह से ज्ञान इकट्ठा करना। So I could have easily been distracted by that and gone after that. तो मैं उससे बहुत ही आसानी से भटक के दूर चला जाता। Right? But Gurudev was saved me from that because he wanted to try to help me to get bhakti, to get prem bhakti. तो गुरुदेव ने मुझसे उससे बचाया क्योंकि गुरुदेव मुझे प्रेम भक्ति देना चाहते थे। And he used to say, Gurudev used to say, you see, jñānīs, they're big cheaters. और मेरे गुरुदेव कहा देखिए कि जो ज्ञानी बहुत बड़े ठग हैं। Right? They're the greatest cheaters. सबसे बड़े ठग हैं वो। Because they have lusty desire. क्योंकि उनके अंदर काम की इच्छा। And what is the lusty desire? They're running after name and fame. वो नाम और प्रतिष्ठा के पीछे जा रहे हैं। They want to be seen as very intelligent, qualified people. वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने बुद्धिमान, कितने योग्यवान व्यक्ति हैं। And they want to be appreciated. They want to be, glorified, worshipped. और वो सराहना चाहते हैं, लोगों के सामने अपनी पूजा चाहते हैं। Because if you can show up your knowledge, क्योंकि अगर अपना ज्ञान दिखाएंगे लोगों को, right, the people go, oh, he's very intelligent. तो लोग कहेंगे ओह तो कितना बुद्धिमान है। Right? So that's why they're cheating. तो इसीलिए ये लोग ठगते Because हैं। it looks like they're just after some spiritual knowledge. क्योंकि ऐसा देखने में लगता है कि वो कुछ आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हैं। But Krishna says, if you surrender unto me, I'm in the heart of every living entity. I'll give you intelligence and faith to understand everything. लेकिन कृष्ण बताते हैं मैं सभी जीवात्माओं के हृदय में स्थित हूँ। अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो मैं आपको बुद्धि दूंगा, श्रद्धा दूंगा सारी चीजों को समझ पाने के लिए। So later on, I thought, oh, Gurudev saved me from jnana. तो बाद में मैंने ये सोचा कि गुरुदेव ने मुझे ज्ञान से बचा लिया। Because I thought I had to like write everything down and study everything like this, क्योंकि मैं सोचता था मुझे सब कुछ लिखने की जरूरत है, सारा अध्ययन करने की जरूरत है, सारा याद रखने की जरूरत है। Especially because I don't have a great memory. क्योंकि मेरी जो है याददाश्त बहुत अच्छी नहीं थी। So because of that, I was thinking, if I don't have a great memory and I don't write it down, I'm going to forget all of these things. तो मैं ये सोचता था कि मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, अगर मैं चीजों को लिखूंगा नहीं तो हो सकता है मैं सब भूल जाऊंगा। So I was nervous because I don't want to lose anything. क्योंकि मैं थोड़ा सहमा रहता था क्योंकि मैं सब कुछ खोना नहीं चाहता था। And then I was surprised later because I still don't have a great memory. और क्योंकि बाद में मुझे और आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी भी मेरे पास अच्छी याददाश्त नहीं है। But somehow or other, these points I remember. लेकिन किसी तरह से ये सारी बातें मुझे याद I है। remember, what my spiritual master spoke. मुझे याद है कि मेरे गुरु ने क्या बातें कही थी। So somehow or other, he planted that inside. तो किसी तरह से उन्होंने मेरे अंदर ये बीज डाल दिया। And then when you need to understand something, all of a sudden they come out. तो और जैसे ही मुझे कभी कुछ समझने की जरूरत पड़ी, अपने आप ये चीजें मेरे अंदर से बाहर आ गई। And sometimes it takes like long time before it comes out also. और कई बार ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा लंबा समय लगा उन सभी चीजों को बाहर Sometimes many years, many conditions have to change in your life. कभी-कभी कई साल बीत गए और जीवन में बहुत सारी स्थितियां बदल गई। And all of a sudden, when those conditions are just perfect for you, then all of a sudden this memory of this instruction
from my spiritual master will come back to me. और जैसे ही सारा परिवेश बिल्कुल उसके अनुकूल हो गया, तो मेरे गुरुदेव ने जो मेरे अंदर चीजें भरी थी, वो सारी याददाश्त मेरी वापस आ गई. And he planted it. I don't remember that. और उन्होंने मेरे अंदर ये बोया था, मुझे ये बातें याद नहीं थी. But when it was time to remember it, लेकिन जब मुझे याद करने की when the जरूरत समय आया, conditions were right to learn that point, जब मेरे सामने वो स्थिति आई कि मुझे अब उस बात को समझने की जरूरत है, then some remembrance would come. Krishna says, I'll give you that remembrance. और मेरे अंदर कुछ याददाश्त आई, क्योंकि कृष्ण बताते हैं मैं आपको याद दिलाऊंगा. Ultimately, it's coming from Krishna in the first place. क्योंकि सबसे पहले ये सारे निर्देश कृष्ण से ही तो आए हैं. So Krishna says, I'm in the heart, I'm source of all knowledge, intelligence, and remembrance. तो कृष्ण बताते हैं मैं हृदय में स्थित हूँ, मैं सारे ज्ञान, बुद्धि और स्मरण शक्ति का स्रोत हूँ. So when all these conditions were there, then all of a sudden I remember, and then I said, oh, that's why Gurudev said that point. तो ये जब स्थिति मेरे सामने आई, तब मुझे याद आया, ओ इसीलिए गुरुदेव ने मेरे सामने ये बात And कही. that's what that means. और गुरुदेव की बात का ये मतलब था. So on some intellectual platform, you say, okay, I think I caught that, I think I understood that point. तो किसी बुद्धि के स्तर पे हम ये बात समझ लेते हैं कि हाँ मैंने ये बात सुन ली है, मैं ये बात समझ चुका हूँ. But it might just be like intellectual, theoretical understanding. लेकिन हो सकता है अभी हमने उतनी गहराई से केवल बुद्धि के स्तर पे ही समझ पाए हैं. But later, when you're in a situation, a circumstance, and it comes up, now you have to practically understand it and apply it. और जब परिस्थिति ऐसी आती है, तब वो चीजें जब बाहर आती है, तब आपको उसको समझने की और जीवन में लगाने की जरूरत पड़ती है. So that just reminded me, because I did the same exact thing, you know. तो ये बात ने मुझे याद दिलाया क्योंकि मैं भी ऐसे ही कार्य कर रहा था. And then I was thinking, you know, when you were doing that, that's what I was doing writing. So then Gurudev is looking at me like he's not listening to me because he's too busy taking notes. कि मुझे फिर याद आया इस बात को, गुरुदेव ने जब मुझे कहा था, क्योंकि मैं जब ऐसे नोट्स बना रहा था, गुरुदेव मेरी तरफ देख रहे थे क्योंकि ये मेरी बात को सुन नहीं रहा है, क्योंकि बहुत व्यस्त है केवल नोट्स बनाने में. And then he wants to explain it to me. और फिर वो मुझे इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं. Right? So if we're just lost intellectual platform, mechanical platform, right, then you're actually missing the points. You can miss the points. तो अगर आप इस तरह से मानसिक स्तर पे हैं, बुद्धि के स्तर पे हैं, और तो आप इस तरह से भटके रहेंगे. Because it's so subtle. क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है. And if we don't listen really, really closely, और अगर आप बहुत ही सावधानी से सुनेंगे नहीं, then we won't really be able to hear it and understand तो it. हम असल में उसको सुन नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं So पाएंगे. any little distraction, तो जो भी छोटी मोटी परेशानी, our mind and senses become distracted. हमारा मन और इंद्रिय किसी से अगर भटक रहा And it's है, very difficult to focus in, तो बहुत ही मुश्किल होता है ध्यान लगा पाना. especially when we're talking about information which is even beyond subtle, विशेष करके जब हम उन जानकारियों के बारे में बात कर रहे हैं जो सूक्ष्म से भी आगे, which means, you know, spiritual platform. इसका मतलब आध्यात्मिक This स्तर है. information is for the soul. ये जानकारी आत्मा के लिए है. So it really does take a lot of, you know, concentration and internal prayer. तो इसके लिए बहुत सारा ध्यान या भीतरी प्रार्थनाएं करने की So जरूरत pray to है. Krishna, please help me to understand what are these points. कृष्णा से प्रार्थना करने की जरूरत है कि मेरी मदद कीजिए, इन बातों को कैसे मैं समझ सकता हूँ. And then later when I went home, then I would sometimes listen to the class. और बाद में जब मैं घर जाता था तो मैं उस क्लास को सुनता था. And then I would listen what verses Gurudev was quoting, और फिर मैं सुनता था कौन कौन से श्लोक गुरुदेव बता रहे हैं, or what verses Prabhupada was quoting. या कौन से श्लोक प्रभुपाद बता रहे हैं. And then I would research those verses, और फिर मैं उन श्लोकों के ऊपर खोजबीन करता था. and I would try to understand why are those quotes, how is that relevant to the teaching that I heard today. और मैं ये समझने का प्रयास करता था कि ये श्लोक कैसे इन जो बातों को मैं आज समझने का प्रयास कर रहा था उन सब से जुड़े हुए हैं. And that way you can just like really condense it and back it up. और इस तरह से आप इसको और ज़्यादा गाढ़ा बना सकते हैं अपनी समझ को और ज़रूरत के समय इस्तेमाल कर सकते So हैं. both things are very important. तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. Right, but when we're hearing Hari-katha, Krishna-katha, then it's the shravanam, we have to be very, how do you say, concentrated. लेकिन जब हम श्रवण करने आते हैं हरि कथा कृष्ण कथा, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है. Because intellect, mind and senses is still influenced by these material desires, material contamination. क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारे मन, हमारी इंद्रिय अभी भी भौतिक इच्छाओं से प्रभावित हैं. And so much modes of material nature is also there, we can easily misunderstand. और प्रकृति के गुणों का भी बहुत सारा प्रभाव है, तो हम तुरंत ही कोई चीज़ को गलत समझ सकते हैं. So that means there's a lot of, you know,
distractions and a lot of traps of misunderstanding. इसका मतलब बहुत सारी चीजें हमें भटकाने के लिए बहुत सारा जाल है जो हमें गलत चीजों को समझा So सकता है। that's why we have to go deeper and try to hear on a more spiritual platform. तो इसलिए हमें और गहराई में जाके आध्यात्मिक स्तर में श्रवण करने का And प्रयास to करना depend चाहिए on Krishna. और कृष्ण के ऊपर निर्भर होने का प्रयास करना चाहिए जो सारे ज्ञान बुद्धि के स्रोत हैं। So don't mind. अब बुरा मत मानिएगा। I just saw that's what my Gurudev was seeing when he was watching me, busy taking notes. मैंने वही देखा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे कैसे देखा था जब मैं इस तरह से नोट्स बना रहा था तो मुझे And then I was doing it right in front of him also. और मैं ये सीधे उनके सामने ही बैठ के कर रहा था। Like maybe if I was like 20 rows back or something, maybe he wouldn't have saw me. तो हो सकता है अगर 20 लोगों के पीछे में बैठा हो तब तो शायद वो मुझे देख नहीं पाते। But I really take it as mercy because he saved me from Gyan. क्योंकि मैं इसको एक कृपा के रूप में देखता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञान से बचाया। It's explained if you get bhakti vigyana, means a realized knowledge by the mercy of Guru Krishna. और ऐसा कहते हैं अगर आपको भक्ति विज्ञान मिले जो कि गुरु और कृष्ण की कृपा से आपको मिलेगा Then that's more than Gyan. तो ये ज्ञान से भी ज्यादा है। Gyan is theoretical knowledge ज्ञान जो है एक मौखिक समझ है on the material or mental platform. जो कि भौतिक या मानसिक स्तर पे है। Some intellectual mental platform. बुद्धि मानसिक स्तर पे So होगा। theoretical on material intellectual platform. तो मौखिक भौतिक और बुद्धि के स्तर पे। But Vijnana means science. Prabhupada explains it as scientific. प्रभुपाद बताते हैं विज्ञान मतलब वैज्ञानिक ज्ञान। That means practically realized knowledge. यानी कि व्यवहारिक रूप से जीवन में कैसे लगा सकते हैं वो ज्ञान। So it says if you get mercy of the spiritual master, mercy of Krishna, they purify your intellect, mind and senses, then you can hear on soul platform. कहते हैं अगर आपको कृष्ण की कृपा गुरु की कृपा प्राप्त होती है तो आपके मन इंद्रिय बुद्धि को शुद्ध करेंगे तो आप आध्यात्मिक स्तर पे श्रवण कर पाएंगे। Then we can really hear Śrīmad-Bhāgavatam. तब हम असल में श्रीमद्-भागवतम को Because सुन it says पाएंगे। Krishna is the speaker of the और Bhagavatam. कहते हैं कृष्ण श्रीमद्-भागवतम के प्रवक्ता हैं। So many times Gurudev talked to us about the hearing properly. तो कई बार गुरुदेव हमसे बात करते थे कैसे सही तरीके से श्रवण किया जाता है। The art of hearing. श्रवण की कला क्या है? Because otherwise we cannot get the benefit of that hearing. वरना हमें उस श्रवण का लाभ नहीं मिल पाएगा। If we don't hear properly, we can't even purify our consciousness. अगर हम सही से श्रवण नहीं करेंगे तो हम अपनी चेतना को भी शुद्ध नहीं कर What to सकते। speak of understanding all of the subtleties of in the science of Krishna consciousness. तो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान की सूक्ष्म चीजों को समझने की क्या बात है? So we were reading day before yesterday. तो कल से पहले हम पढ़ रहे थे। We were reading how it says that if we're too much on this mental speculation platform, हम पढ़ रहे थे कि अगर हम बहुत ज्यादा अपने मनोधर्म के स्तर पे रहेंगे, too much dependent on intellect, mind and senses which are influenced by lusty desires, अगर हम बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे बुद्धि और मन और इंद्रिय के स्तर पे जो कि भौतिक स्तर that पे, is sitting places of Maya, जो माया के बैठने का स्थान है, which is influencing our desires. जो हमारी इच्छाओं को प्रभावित करती है, भौतिक इच्छाओं को। Prabhupada says the only thing a soul can do is to desire. प्रभुपाद कहते हैं आत्मा केवल एकमात्र कार्य कर सकती है इच्छा प्रकट करना। Now it's a question of what is the desire? तो अब ये प्रश्न है कि वो इच्छा क्या होगी? Is it spiritual? Is it material? क्या वो आध्यात्मिक है या भौतिक है? Is it pure? Is it contaminated? क्या वो शुद्ध है या दूषित है? And then is it theoretical? और या फिर वो मौखिक है Or is it realized? या फिर उसका अनुभव किया गया है? So all of those things have to be considered. तो ये सारी चीजों को विचार में लाने की जरूरत So है। Prabhupada said as long as we are still on this tamagun, rajagun बताते platform, हैं जब तक हम इस तमोगुण रजोगुण के स्तर में and रहेंगे even sattvagun और platform, यहाँ तक कि सतोगुण स्तर पे भी आ जाएंगे, that means still under bodily conception. यानी कि तभी भी हम शरीर की चेतना के So स्तर there's पे, more or less some type of contamination is still there. तो कम या ज्यादा किसी तरह का एक दूषण बना हुआ है And therefore will still be influenced and dependent on material mind and senses. और इसीलिए हम प्रभावित रहेंगे इस भौतिक मन बुद्धि इंद्रियों से। Therefore Prabhupada said that everyone in material consciousness is addicted to mental speculation. श्री प्रभुपाद बताते हैं जो भी भौतिक चेतना में होते हैं उनको मनोधर्म करने की बुरी आदत लगी हुई है। And then when we're just tuning in and listening to the mind, then naturally Maya will just concoct some type of materialistic thought and desire. अगर हम इस तरह से अपने मन को सुनने में लगे रहेंगे तो माया कुछ न कुछ ऐसी भौतिक
इच्छाएं आपके अंदर प्रकट करेगी। So until we fully surrender to Krishna, Rishikesh, master of the mind and senses, जब तक हम पूर्ण शरणागत नहीं करते हैं कृष्णा ऋषिकेश को जो मन इंद्रिय के स्वामी हैं, only then will he agree to purify and control our mind and senses. केवल तभी वो सहमत होंगे और हमारे मन और इंद्रिय को नियंत्रित करने के लिए तैयार होंगे। And then he'll order Maya to release you. और वो माया को आदेश देंगे आपको मुक्त Krishna करने says, के लिए। Mama Maya Dharatya. कृष्ण कहते हैं मम माया Very difficult to overcome Maya. माया से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। Not to listen to Maya, माया को ना सुनना, mental speculation, मनोधर्म mental को ना concoction. मानो मनगढ़ंत चीजों को ना सुनना। And this is a very, very deep-rooted addiction और ये process. बहुत गहराई से हमारे अंदर बुरी आदत है। All these gross and subtle material desires are coming because of this asatsanga. तो ये सारे स्थूल या सूक्ष्म इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं असत्संग की वजह से आ रही हैं। And associating on this material mental platform. और हम इस भौतिक मानसिक स्तर पे संग कर रहे हैं। And that is where Maya is putting all of these thoughts and desires और there. वहीं पे माया हमारे भीतर ये सारी इच्छाएं, सारे विचार डाल रही So है। Prabhupada explains that based on your association, प्रभुपाद बताते हैं आपके संग के आधार पे who you are associating and hearing from, जिन व्यक्तियों के साथ आप संग कर रहे हैं, जिनसे आप श्रवण कर रहे and हैं, whether their desires are spiritual or material, उनकी इच्छाएं भौतिक हैं या आध्यात्मिक, and then how pure desire और कितनी शुद्ध इच्छाएं हैं उनके अंदर, will influence our desire. वो हमारी इच्छाओं को उसी आधार पर प्रभावित करेंगे। So when I was reading this verse, I was thinking, here's all these kāmīs, jñānīs, yogīs, they all have different types of desires. तो मैं जब ये श्लोक पढ़ रहा था तो मैंने देखा यहाँ बहुत सारे कर्मी, ज्ञानी, योगी के बारे में बताया है जिनके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। So how did they get all of those तो desires? इन सबको ये इच्छाएं मिलती कहाँ से? It means they were associating with and hearing from persons who had similar desires. यानी कि वो संग कर रहे थे और श्रवण कर रहे थे उन लोगों से जिनके भीतर भी ऐसी इच्छाएं मौजूद हैं। So if you associate with materialistic persons, kāmīs, you will become a kāmī. तो अगर आप कर्मियों के साथ संग करेंगे, उनसे श्रवण करेंगे तो आप कर्मी बन If you जाएंगे। associate with jñānīs, then will desire to become the jñānīs. अगर आप ज्ञानी के साथ संग करेंगे तो आपके अंदर भी ज्ञानी बनने की इच्छा आएगी। And if we associate with pure devotee, then that will develop this desire to become like that. और अगर आप शुद्ध भक्त के साथ संग करेंगे तो आपके अंदर ये इच्छा नहीं लगेगी कैसे आप उनकी तरह बन पाएंगे। Now here it says that such pure devotees, they're desireless. तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे शुद्ध भक्त के अंदर कोई इच्छा नहीं But होती। another place in Śrīmad-Bhāgavatam, Prabhupada said, you cannot really be desireless. और दूसरी जगह पे श्री प्रभुपाद ने श्रीमद्-भागवत में बताया है कभी भी कोई इच्छाहीन नहीं हो So सकता। this means material तो desire, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भौतिक इच्छा से बहुत gross रहते हैं, or subtle. स्थूल या सूक्ष्म। So until we have a real desire to want to surrender and serve Krishna in Shuddha Bhakti, Prem Bhakti, अगर हमारे पास असल इच्छा नहीं है कृष्ण को शरणागत सेवा करने की शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति से, then we cannot get freed from this mental speculation and mental concoction. तो हम इस मनोधर्म से मनगढ़ंत चीजों से बच नहीं सकते, मुक्त नहीं हो Because सकते। Krishna will not purify and control the mind and senses and release you from Maya. क्योंकि कृष्ण नियंत्रित और शुद्ध नहीं करेंगे मन और इंद्रिय को और आपको माया से मुक्त नहीं So करेंगे। Krishna says, if you surrender unto तो me, कृष्ण कहते हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे then I'll purify, control your mind and senses for you. तो मैं आपके मन और इंद्रिय को शुद्ध कर दूंगा आपके लिए। And then he'll inform Maya, do not put any crazy thing in this person's head. और वो माया को जानकारी देंगे कि इस व्यक्ति की सर में कोई भी गलत No material इच्छाएं मत thoughts, डालिए, no कोई material desires. भौतिक इच्छा नहीं, कोई भौतिक विचार नहीं। And then it says that even in your dream it will not come to you. और फिर कहते हैं यहाँ तक कि सपने में भी ऐसी इच्छाएं आपके अंदर नहीं So आएंगी। that's explained that when we do pure devotional service, desire for that, get the mercy of the Lord, then all of these things becomes dissolved. तो कहते हैं जब हम इस तरह शुद्ध भक्ति की इच्छा करते हैं और भगवान को संतुष्ट करते हैं इस बात से, तो हम कृष्ण की कृपा से ये सारी इच्छाएं हमसे अंदर से चली जाती I हैं। think Prabhupada used the word subdued. It starts to become controllable. और मुझे याद है प्रभुपाद जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं इनको भौतिक इच्छाओं को ये दब जाती हैं और ये नियंत्रण में आ जाती हैं। So Prabhupada gives an example like the snake when you knock out the teeth of the snake. प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जैसे कि कोई जहरीला सांप है उसके दांतों को तोड़ दिया गया है। So it's moving around, but it cannot bite you and kill you. तो ये चल फिर सकते हैं लेकिन आपको काट के आपको मार नहीं सकते। So as long as we have material body, we're going to have these senses are going to be demanding material gratification. तो जब तक हमारे पास ये भौतिक इंद्रियां हैं, शरीर हैं, तो ये हमेशा कुछ न कुछ इंद्रिय भोग की मांग करेंगी। But if we get mercy of Guru and Krishna, they knock out
the teeth, it means it knocks out the strength of it. और जब हम गुरु कृष्ण की कृपा मिलेगी तो इन सांप के दांत को तोड़ दिया जाएगा, यानी कि इन इच्छाओं की शक्तियां खत्म हो जाएंगी. So even if some desire comes, then you'll have intelligence and strength to understand, okay, I need to surrender, take shelter of instructions of Guru and Krishna. तो ये इच्छाएं जब आपके सामने आएगी तो आपको शक्ति मिलेगी और बुद्धि मिलेगी कि अब मुझे कृष्ण को शरणागत होकर उनकी सेवा करने की जरूरत है. Seriously surrender and take shelter of Rishikesh, take shelter of holy name. गंभीरता से शरणागत करने की जरूरत है, ऋषिकेश का आश्रय लेने की जरूरत है, भगवान के नाम का आश्रय लेने की जरूरत है. Then Krishna knows, oh, this person now is depending on me, is trying to surrender to me. और तब कृष्ण देखेंगे, ओ ये एक व्यक्ति में मुझे शरणागत करने का प्रयास कर रहा है, मेरे ऊपर निर्भर होने का प्रयास कर रहा है. Then automatically Krishna says, then I'll purify and control your mind and senses for you. तो कृष्ण बताते हैं स्वाभाविक रूप से मैं आपके मन और इंद्रियों को आपके लिए नियंत्रित कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा. So without this desire of fully surrendering and performing pure devotional service, we cannot get free from mental speculation and mental concoction. तो अगर हमारे अंदर ये शुद्ध भक्ति करने की इच्छा नहीं होगी, भगवान को शरणागत करने की, तो हम ये मनोधर्म से, मनगढ़ंत चीजों से मुक्त नहीं हो पाएंगे. That means we'll not be able to chant Shuddha Nam. इसका मतलब हम शुद्ध नाम जप नहीं कर पाएंगे. And without chanting Shuddha Nam, we cannot get Krishna prema. और शुद्ध नाम जप किए बिना हम कृष्ण प्रेम नहीं पा पाएंगे. You have to chant pure holy name to get Krishna prema. शुद्ध नाम जप करना होगा कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने. So as long as these desires are there, we're maintaining material thoughts and desires, then we cannot chant Shuddha Nam. तो जब तक हमारे अंदर ये भौतिक इच्छाएं, आसक्तियां और इनको हम बनाए रखे हैं, तो हम शुद्ध नाम जप नहीं कर Because सकते. we're still being influenced by this contamination of Maya, who's controlling the mind through the mental speculation, mental concoction. क्योंकि अभी भी हम प्रभावित हैं इस माया के कलमशों से, जो हमारे भौतिक मन इंद्रियों को हमेशा प्रभावित करती रहती हैं. So Prabhupada was saying, you cannot artificially say, okay, I'm not going to think about that. प्रभुपाद कहते हैं आप ऐसे बनावटी तरीके से नहीं कह सकते, ओ मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं. Right? I'm just going to chant and not think about that. मैं बस जप करूंगा और इसके बारे में कुछ नहीं सोचूंगा. So Prabhupada said, you cannot artificially get freed from that. प्रभुपाद बताते हैं आप बनावटी तरीके से इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे. All you can do is try to genuinely be convinced and convince Krishna that you want to surrender to him. एक ही मात्र कार्य आप कर सकते हैं कि गंभीरता से कृष्ण को सुनिश्चित करने का प्रयास, आश्वस्त करने का प्रयास कीजिए कि आप उनको शरणागत, उनकी सेवा करना चाहते हैं. And if it's real, और अगर वो सच्चा होगा, Krishna will know it. और कृष्ण उस बात को And जानते then हैं, Krishna, he's the purest of the pure, he'll purify our mind and senses for us. और कृष्ण सबसे शुद्धतम में विशुद्ध है, वो हमारे लिए हमारे मन और इंद्रियों को शुद्ध कर देंगे, नियंत्रित कर देंगे. Otherwise we're chanting like, okay, I'm not going to think like that, I'm not going to have this desire, that desire. वरना हम जब कर रहे हैं और सोच रहे हैं मैं ये नहीं सोचूंगा, इस इच्छा के बारे में नहीं सोचूंगा, उसके बारे में नहीं सोचूंगा, I'm not going to make these plans. मैं ये योजना नहीं बनाऊंगा मन में. Like we think japa period is like that's when you're the most peaceful time to make all your plans. हम तो जब के समय में ही सोचते हैं सबसे अच्छा मौका है, शांति मौका है मेरे पास कि मैं सारी योजना बैठ के बनाऊंगा. Because that's everything before that's like distraction, right? So उससे पहले सभी चीजें it's a little peaceful. Now you have to plan make, you know. भटके रहते हैं, जब कर रहे थे तब सोचते हैं अभी सारी योजना बनाऊंगा मैं. So we're not chanting properly. तो हम सही तरीके से जप नहीं कर रहे हैं. So idea is how to become pure devotee. तो विचार है कि कैसे हम उसको करके शुद्ध भक्त बन सकते How हैं, to become desireless. कैसे हम इच्छाहीन बन सकते हैं. Now Prabhupada says you can't kill your desire, only you have to transform it. प्रभुपाद कहते हैं आप अपनी इच्छाओं को मार नहीं सकते, आपकी इच्छाओं को आपको बदलना पड़ेगा. So we have to make it manmana bhava mad bhakto. Krishna says only think about me. हमें इसे मन मना भाव मत भक्त बनाना. कृष्ण कहते हैं केवल Become मेरे my बारे में bhakta, सोचो, मेरे become my भक्त pure बनो, devotee. मेरे शुद्ध भक्त बनो, Then surely you'll come to me. तो निश्चित ही तुम मेरे पास वापस आओगे. So without being convinced and convincing Krishna, तो अगर हम स्वयं आश्वस्त नहीं, कृष्ण को हमने आश्वस्त नहीं किया, there's no purification of mind and senses. तो मन इंद्रियों का शुद्धिकरण नहीं हो There's सकता. no release or freedom from this addiction of mental speculation. कोई मुक्ति, कोई आजादी नहीं मिलेगी इस मनोधर्म से. And if we're just floating on this mental speculation platform, sure enough, Maya will concoct some materialistic thought, desire, or plan. तो अगर हम इस मनोधर्म की स्थिति में तैरते रहेंगे तो निश्चित ही माया हमारे अंदर कोई भौतिक इच्छा, भौतिक योजना डालती And रहेगी. that's what Maya does. She has two potencies: covers your good intelligence, और यही माया का कार्य है, वो दो कार्य करती है. पहले आपकी बुद्धि को ढक देती है, and then gives you this concoction for material plan making for sense gratification. और फिर मनगढ़ंत चीजें आपके अंदर बनाने की योजना बनाती है कि आके उन योजनाओं को पूरा करके आप इंद्रिय भोग Then कर just सकते हैं, drags us away. और फिर हमें रास्ते से खींच कर ले जाती है.
So we can only counter that by hearing what is the perfectional platform, what does Krishna want, what the pure devotees doing. तभी इसको हम बदल सकते हैं जब हम सुनेंगे कि कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं, शुद्ध भक्त हमसे क्या अपेक्षाएं करते हैं, How are they able to please Krishna? कैसे शुद्ध भक्त कृष्णा को सुखी कर पा रहे हैं. And Krishna says, I'm only pleased by pure devotional service. और कृष्ण बताते हैं मैं केवल शुद्ध भक्ति से ही संतुष्ट सुखी हो सकता हूँ. Do you have time? क्या आपके पास थोड़ा समय है? So here's some quotes from Guru Sadhu Shastra तो यहाँ पे कुछ गुरु साधु शास्त्र के वाक्य हैं that explain how Krishna is only interested in and attracted to pure devotional service. जो हमें बताता है कैसे कृष्ण को केवल रुचि या आकर्षण शुद्ध भक्ति से है. And it's very important because without that, there can be no freedom from mental speculation, mental concoction, all of these things which are keeping us in material consciousness and engaged in this Mayic activities. और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसको जाने बिना आप भौतिक इच्छाओं से, भौतिक इंद्रिय भोग की मनगढ़ंत चीजों से, मनोधर्म से और भौतिक स्तर से कभी मुक्ति नहीं पा सकते. We can read a few of those. तो उनमें से हम You कुछ पढ़ have सकते हैं. patience with me? आपके पास थोड़ा धैर्य है मेरे साथ? Are you awake? क्या आप जगे हुए हैं? And Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1773. चैतन्य चरितामृत आदि लीला 1773. It says by following the paths of speculative philosophical knowledge. कहते हैं कि सैद्धांतिक मनोधर्म का रास्ता अपनाकर, There's jnana ज्ञान की रास्ते को and the अपनाकर fruitive activity. या कर्म के रास्ते को Karma अपनाकर, yogi, कर्म योग बनकर mystic yoga. या अष्टांग योग करके, Yeah, how to control your senses. या कैसे अपने इंद्रियों को वश में करना है. One cannot satisfy Krishna, ये सब करके आप कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर सकते who is the Supreme Lord. जो परम भगवान है. Only unalloyed devotional love or Shuddha Bhakti for Krishna केवल अमिश्रित प्रेम या कृष्ण के लिए शुद्ध भक्ति is the only cause एकमात्र कारण है for the Lord's satisfaction. भगवान की संतुष्टि का. That's the only cause for the Lord's satisfaction. यही एकमात्र कारण है भगवान So की if we are संतुष्टि का. maintaining these lusty, selfish desires, gross or subtle, तो हम बनाए हुए हैं काम की इच्छाओं को जो स्थूल या सूक्ष्म रूप से हमारे भीतर है and calling ourselves devotee, और अपने आप को हम भक्त बोल रहे हैं, if it's not pleasing and satisfying the Lord, then what is the use of it? अगर ये भगवान को संतुष्ट नहीं कर रहा, उनको आनंद नहीं दे रहा, तो इन इच्छाओं का लाभ क्या है? In the Śrīmad-Bhāgavatam 11th canto, श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद में बताया गया है. in 14th chapter, verse 20, 14 अध्याय श्लोक संख्या 20. Krishna is speaking to Uddhava, कृष्णा उद्धव से कह रहे हैं, and he says, "My dear Uddhava, neither through Ashtanga yoga, वो कह रहे हैं हे प्रिय उद्धव, ना तो अष्टांग योग से, this mystic yoga system to control your senses, जो अष्टांग योग की पद्धति है अपनी इंद्रियों को वश में करने की, not through impersonal monism, और ना ही निराकार शून्यवाद से, not through your analytical study of the Shastra, of the absolute truth, या फिर शास्त्र या परम सत्य के अध्ययन से, not through your austerities, ना अपनी तपस्या से, not through your charity, ना अपने दान से, not by acceptance of sannyas. और ना तो संन्यास ग्रहण करने से. None of them can satisfy me इनमें से कोई भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगा, as much as by developing unalloyed devotional service unto me. उतना अगर कोई मुझे अमिश्रित प्रेम और भक्ति उत्पन्न कर ले. None of those things or all of those things. इनमें से कोई भी या सभी मिलकर, Krishna said, I'm not so pleased. कृष्ण कहते हैं मैं उतना संतुष्ट I'm नहीं not so होता, satisfied. मैं संतुष्ट नहीं होता. In another translation of that same verse, और उसी श्लोक का और एक अनुवाद है, it says, My dear Uddhava, कह रहे हैं हे प्रिय उद्धव, the unalloyed loving devotional service which is rendered to me by my pure devotees, जो अमिश्रित शुद्ध भक्ति जो मेरे भक्त मेरे लिए करते हैं, that brings me under their control. वो अपने नियंत्रण में मुझे ले आते हैं.
So Krishna is supreme controller. तो कृष्ण परम नियंत्रण करता But है। he's telling my devotees who love me, they bring me under control. लेकिन कह रहे हैं कि जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं वो मुझे अपने नियंत्रण में ले आते हैं। So otherwise not satisfied, not pleased. वरना ना तो वो सुखी होते हैं ना संतुष्ट होते हैं। Krishna says, I cannot be thus controlled by those who are engaged in mystic yoga. कृष्ण इसलिए बताते हैं कि मैं उन लोगों से संतुष्ट नहीं होता जो अष्टांग योग करने में लगे हैं, Sankhya philosophy, सांख्य सिद्धांत का अध्ययन करने में लगे हैं, pious activity, पुण्य कर्म कर रहे हैं, by Vedic study, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, by your austerity or your renunciation. तपस्या या संन्यास से। So only pure devotional service attracts Krishna. तो केवल शुद्ध भक्ति कृष्ण को आकर्षित It's करती the है। only thing that satisfies Krishna. यही एकमात्र चीज जो कृष्ण को संतुष्ट करती है। And if we want other thing, then Krishna says, then I'll just hide myself from you. और कृष्ण बताते हैं अगर कोई तुम अन्य चीज चाहते हो तो मैं अपने आप को हमेशा छुपा कर रखूंगा आपसे। So if we want some other thing, then Krishna will let us fulfill those desires, gross or subtle material desires. तो अगर हम कोई अन्य इच्छा करते हैं तो कृष्ण हमें अनुमति देंगे उन स्थूल या सूक्ष्म इच्छाओं को पूरा करने के लिए। Then he continues speaking to Uddhava. तो फिर उद्धव से आगे बात करना जारी रखते हैं। Only by practicing unalloyed devotional service with full faith in me केवल पूरी श्रद्धा से जो अमिश्रित शुद्ध भक्ति मुझे करते हैं can one obtain me. मुझे वो प्राप्त करते हैं। I am naturally very dear to my devotees. और मैं स्वाभाविक रूप से अपने भक्तों के लिए बहुत प्रिय हूँ Take me as the only goal of their loving service. जो मुझे केवल अपना एकमात्र लक्ष्य मानते हैं अपने शुद्ध भक्ति का। Then I'll read the last one. और मैं आखिरी I have lots of them, but I know you have limited patience. तो मेरे पास बहुत सारे लेकिन मुझे पता है आप लोगों का धैर्य बहुत सीमित है। So in Śrīmad-Bhāgavatam in the 7th canto, chapter 7, भागवतम सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय, Prahlad Maharaja is speaking to his demon friends. प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं। Well, let's say it says, my dear friends, sons of the demons. यहाँ पे यह बता रहे हैं, हे मेरे असुरों के प्रिय पुत्रों। Because if they're listening to Prahlad and loving, liking Prahlad, then really maybe they're not demons, right? क्योंकि वो अगर प्रहलाद महाराज को पसंद कर रहे हैं और उनसे सुनने में उनको बहुत प्रेम आ रहा है तो इसका मतलब अवश्य वो असुर नहीं है। So he's calling, oh, sons of the तो demons. उसको कह रहे हैं आप असुरों के पुत्र हैं। So Prahlad said, you cannot please the Supreme Lord by becoming a perfect Brahmanas. तो कह रहे हैं आप परम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते पूर्ण ब्राह्मण बनकर Or demigods. या देवता बनकर Or great saints. या बहुत बड़े साधु बनकर Or by becoming perfectly good in etiquette. या फिर पूर्ण तरीके से सदाचार में एक सही व्यवहार By लाकर your vast learning. या फिर अपने अध्ययनों से। Do you want to go? क्या आप जाना चाहते हैं? You want to go? Are you comfortable? आपको आरामदायक लग रहा है या बाहर जाना चाहते हैं? You alright? आप ठीक है? Sure? ठीक है? Prahlad says, none of these qualifications can awaken the pleasure of the Lord. प्रहलाद महाराज बताते हैं इन सारी योग्यताओं से आप भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते। So being a perfect Brahmana, पूर्ण ब्राह्मण a बनकर demigod, देवता, a saint, साधु, perfect in your behavior and etiquette, सदाचार में और व्यवहार में with निपुण, great learning, बहुत बड़ा अध्ययन, none of these qualifications कोई भी इनमें से योग्यताएं can awaken the pleasure of the Lord. भगवान के आनंद को जगा सकती है। Not by your charity, ना अपने not तपस्या by से, your austerities, तपस्या से, not by your अपने sacrifice, यज्ञों से not by your cleanliness or vows, और अपने स्वच्छता से और अपने शपथ प्रतिज्ञा से can one satisfy the Lord. कोई भगवान को संतुष्ट कर सकता है। The Lord is pleased only भगवान केवल संतुष्ट सुखी होते हैं if one has unflinching अगर किसी के पास अटूट and unalloyed devotion to Him. अमिश्रित भक्ति है भगवान के प्रति। And without such sincere devotional service, और बिना ऐसे एक निष्ठ भक्ति में सेवा के everything is simply a show. सब कुछ केवल एक दिखावा है। Because it has lusty, material, gross or subtle desire. क्योंकि इनके अंदर Why are काम we की doing all of these things? स्थूल या कुछ बहुत सूक्ष्म इच्छाएं क्यों हम ये सारे काम कर रहे हैं? So it doesn't even awaken the pleasure of the तो Lord. भगवान के आनंद को जगा तक नहीं सकता।
Because we're not doing for the pleasure of the क्योंकि हम Lord. कर ही नहीं रहे भगवान के आनंद। We're doing for our own selfish, lusty purpose. हम स्वयं के स्वार्थ काम इच्छा को पूरा करने के लिए कर So रहे हैं। because it's selfish, तो क्योंकि ये स्वार्थ we're not agreeing to try to render pure loving devotional service to the Lord. हम सहमत नहीं हो रहे हैं भगवान को शुद्ध भक्ति उनकी सेवा करने की। Then He'll know that. और कृष्ण इस बात को जानते हैं। We may say, "Oh Krishna, I want you. I'm crying for you." Krishna, we cannot cheat Krishna. हम ऐसा रो के दिखा सकते हैं कृष्णा मैं आपको चाहता हूँ। So sentimentally crying to Krishna, Krishna's like, "This fool is sentimentally crying to me," you know. तो अगर कोई भावुकता से कोई मूर्ख की तरह रोएगा तो कृष्ण जानते हैं भावुक मूर्ख की तरह रो रहा है। But we're thinking it's so sincere. लेकिन हम सोचते हैं बहुत एकनिष्ठ हैं, हे भगवान। I'm crying here, Krishna. मैं रो रहा हूँ यहाँ कृष्णा। So and because of pride and the false ego, we don't even realize it's sentimental. और दम्भ में मिथ्या अहंकार में हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम बहुत भावुक हैं। We're still in the tamagun, rajagun, and we're crying in the mood of separation. हम अभी भी तमोगुण में, रजोगुण में और हम वीरा के भाव में रोने का नाटक कर रहे हैं। So this is sentimental. ये सब है भावुकता It's है, not the real. असल नहीं है। And then when Krishna doesn't reciprocate with us, और जब कृष्ण हमें कोई प्रतिफल नहीं देते we're हैं, like, what's wrong? हम कहते हैं क्या गड़बड़ Why am I not है? getting any results? क्यों मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है? This doesn't work. ये सब काम ही नहीं करता, It's not working. काम नहीं कर रहा। Yeah, this is problem. यही समस्या है। Prabhupada says in the Purport, all of these people with all these desires, they're non-devotees. प्रभुपाद बताते हैं ये सारे लोग जिनके अंदर ये सारी इच्छाएं ये सभी अभक्त हैं। We're saying we're devotees, हम कह रहे हैं हम भक्त हैं, right? We're Vaishnavas. हम वैष्णवी हैं। Right? But as long as we have, oh, there you are! तो यहाँ हैं आप, I was waiting for you. मैं आपका इंतजार कर रहा था। I had all this class on Mahaprabhu. मैंने पूरा महाप्रभु के लिए क्लास तैयार किया था। All right, we're happy to have you. हमें बहुत खुशी आप आए। We're talking about the pure loving devotion to Krishna. हम कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। Mahaprabhu is telling this is the only way to please the Lord. महाप्रभु बता रहे हैं कि एक ही मात्र रास्ता है भगवान को सुखी करने का। And everything else we're doing besides that is just like a big show, sentimental show. और इसके अलावा हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस केवल दिखावा है, बड़ा भावुकता का नाटक है हमारा। So saying how to really become तो devotee. वो बता रहे हैं कि कैसे हम असल में भक्त बन सकते हैं। Many times Gurudev would be reading and Prabhupada would say, you know, the devotee does like this, and then Gurudev will stop and say, wait a second. Let's talk about the definition of who's really a devotee. तो कई बार जब पढ़ रहे होते थे हम ऐसे कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्तों के बारे में कृष्ण के भक्त ऐसे होते हैं, तो गुरुदेव रुक कर बोलते थे चलिए ठीक है पहले हम ये देखते हैं कि भक्त का परिभाषा क्या होता है। Prabhupada many places said actual devotee. प्रभुपाद कई बार कहते हैं असल भक्त, The factual devotee. तत्व में भक्त, In tattva devotee. इन तत्वों में भक्त। That means a Shuddha Bhakta, इसका Premi मतलब Bhakta. शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त। Right? Otherwise we're Bhakta of something else. वरना हम भक्त हैं किसी और चीज के, Karma, Jnana, Yoga. कर्म ज्ञान योग। Right? So devotee. हम भक्त हैं Of what? Of किसके who? और क्या चीज के। So here, Prabhupada telling that if you're desiring all of this karma, jnana, yoga, तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे अगर आपके अंदर इच्छा है कर्म ज्ञान योग, any gross or subtle selfish desire, कोई भी स्थूल सूक्ष्म स्वार्थ की इच्छाएं, Prabhupada saying these are non-devotees प्रभुपाद बता रहे ये सब अभक्त हैं because they are lusty, kāmī. क्योंकि वो कामी हैं। Mahaprabhu is saying therefore they're lusty, therefore they cannot be peaceful, they cannot be satisfied. महाप्रभु बताते हैं वो कामी होते हैं इसलिए वो कभी संतुष्ट कभी So शांत if we नहीं हो have सकते। gross or subtle materialistic or lusty desires, that's not pleasing to Krishna. अगर आपके अंदर स्थूल या सूक्ष्म काम की इच्छाएं हैं ये कृष्ण को आनंद नहीं दे That's सकती, not attracting Krishna. कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकती। Krishna says, if you come in this mood of karma, jnana, yoga, I'll just hide myself. और कृष्ण बताते हैं अगर आप इस कर्म ज्ञान योग के भाव से आएंगे तो मैं अपने आप को Because you छुपा लूंगा। really don't want me. क्योंकि असल में तुम मुझे नहीं चाहते हो, You have some other desire. तुम्हारे अंदर कोई दूसरी You इच्छा cannot है। cheat Krishna. हम कृष्ण को ठग नहीं सकते। So because Krishna is only attracted and
satisfied by pure devotional service. क्योंकि कृष्ण केवल आकर्षित होते हैं या संतुष्ट होते हैं शुद्ध भक्ति से। Until we do that, और जब तक हम वो नहीं करें, only then we become desireless. तब जाकर ही हम इच्छा से मुक्त हो सकते हैं। Only then you can become peaceful and satisfied and happy. और तभी केवल आप शांत, संतुष्ट और सुखी हो सकते हैं। And not until then. और उससे पहले आप नहीं हो सकते। So here, if we have all of these desires, Prabhupada said, then you're non-devotee. प्रभुपाद बता रहे हैं अगर आपके अंदर ये सारी इच्छाएं हैं तो So आप we एक want to भक्त हैं। become pure devotee. तो हम शुद्ध भक्त That बनना means चाहते हैं। giving up all gross and subtle material desires. इसका मतलब सारे स्थूल या सूक्ष्म भौतिक इच्छाओं का हमें त्याग करना। That's the work of a devotee. और यही एक भक्त का कार्य That's the work of someone who wants to become a devotee. यही उस भक्त का We're कार्य है trying जो to भक्त purify बनना ourselves चाहता है and get free from gross and subtle selfish material desire. कि कैसे शुद्ध करके स्वयं को स्थूल या सूक्ष्म भौतिक इच्छाओं से मुक्त किया जा So सके। if we're not working in that way, अगर हम उस दिशा में कार्य नहीं कर रहे हैं then we're probably say you're acting like non-devotee. तो प्रभुपाद बता रहे हैं आप एक अभक्त हैं। Now, when Prabhupada is referring to this verse in Bhagavad Gita, the peace formula verse, तो प्रभुपाद भगवद गीता के इस श्लोक को यहाँ बता रहे हैं पीस शांति का सूत्र। right? One who understands Krishna is supreme enjoyer, जो इस बात को जानते हैं कृष्ण परम भोग करता है, परम मालिक हैं, a well-wishing friend of all living entities, सभी जीवात्माओं के शुभचिंतक मित्र हैं, then only they can become peaceful and happy. तो केवल वही सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं। But we're theoretically saying, okay, Krishna is the supreme enjoyer and he's the proprietor and he's everybody's well-wishing friend. I know that verse. तो हम मुंह से कह रहे हैं कि हमें पता है कृष्ण परम भोग करता है, सभी चीजों के मालिक हैं, सभी के शुभचिंतक मित्र हैं, हमें ये श्लोक याद है। Why are we not peaceful and satisfied? लेकिन हम क्यों शांत और संतुष्ट नहीं हैं? Did you ever ask yourself that question? तो क्या आपने कभी ये सवाल स्वयं से Well, पूछा? here Prabhupada answers it. और प्रभुपाद यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं, He says, one who factually understands, जो तत्व में इसको जानता है, one who has tattva vijnana, जिसके पास तत्व विज्ञान है, not theoretically, not jnana. मौखिक ज्ञान है। Bhaktaram jagatapasam sarvalokam maheshwaram, we're quoting the verse, इस right? तरह से श्लोक बता रहे हैं Only they can become peaceful and happy. केवल वही शांत और संतुष्ट है, And they were completely unpeaceful and unhappy. और हम पूरी तरह से असंतुष्ट अशांत हैं। So the theoretical is not going to work. तो ये मौखिक ज्ञान काम नहीं आएगा। Jnana means a theoretical ज्ञान understanding. मतलब मौखिक समझ है आपको। So Krishna said, this doesn't attract me. तो कृष्ण बताते हैं ये मुझे आकर्षित नहीं कर पाएगा। So Krishna says, then I hide myself from और it. कृष्ण बताते हैं मैं अपने आप को छुपा भी लूंगा। So if Rishikesh, the master of the mind and senses, is hiding himself from us, तो ऋषिकेश जो मन इंद्रिय के स्वामी है, जो है हमसे छुप रहे हैं, how we're going to have purified mind and intelligence and senses? तो कैसे हम शुद्ध मन इंद्रिय बुद्धि पा How पाएंगे? are we going to attain that? कैसे हमें वो प्राप्त होगा? Where else you're going to get that? कहाँ से आपको वो जाकर मिलेगा? Then how do you get free from mental speculation? तो कैसे आप मनोधर्म से मुक्त हो How पाएंगे? do you get free from this influence of Maya with so much mental concoction? तो कैसे आप माया के प्रभाव से बच पाएंगे जो इतना सारा मनोधर्म है? It's not possible. ये संभव नहीं है। One who factually understands, factually realizes this. जो तत्व में जानता है, तत्व में समझता है, But without Krishna's mercy and Guru's mercy, who's going to factually understand that? लेकिन कृष्ण की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना कौन इसको तत्व में समझ पाएगा? Krishna is God and we are eternal servants. And कृष्ण भगवान है, हम नित्य दास हैं। Prabhupada said it's not enough to say that we are not this body. प्रभुपाद कहते हैं ये कहना पर्याप्त नहीं है कि हम ये शरीर नहीं है। We are not this body. Krishna's God. We are Bhagavan's servants. हम ये शरीर नहीं है, कृष्ण भगवान है, हम दास हैं। Prabhupada said this is theoretical understanding. प्रभुपाद कहते हैं ये एक मौखिक समझ है। And so that will not fool Krishna. तो ये कृष्ण को मूर्ख नहीं बना पाएगा। Prabhupada said it must be factually realized, प्रभुपाद कहते हैं तत्व में उसका factually साक्षात्कार होगा, understood, तत्व में समझना and we होगा, must act with that factual understanding and realization as an eternal servant of Krishna. और उस तत्व ज्ञान के साथ, तत्व विज्ञान समझ के साथ हमें कृष्ण के दास के रूप में कार्य करना शुरू And करना know how to attract him by the execution of proper and sufficient devotional service. और हमें ये सीखना होगा कैसे हम कृष्ण को आकर्षित कर सकते हैं सही तरीके से और पर्याप्त रूप से कृष्ण की भक्ति में सेवा करके। Then Krishna says, then I'll show special mercy to you. तो कृष्ण बताते हैं मैं आपको एक विशेष I'll कृपा destroy all this
all this tamagun, all this ignorance, सारा तमोगुण, सारा अज्ञान नष्ट कर दूंगा, all of this sinful reactions, सारे पाप कर्म के फलों को नष्ट कर all दूंगा, of this different layers of lust which is contaminating you, काम के अलग अलग आवरण जो आपको दूषित किए हुए हैं कलमशों and से, then I'll उसको मैं मुक्त reveal कर दूंगा। myself to और you. मैं स्वयं को आपके सामने प्रकाशित कर But दूंगा। without Krishna's mercy, Guru's mercy, how are we going to purify mind, intelligence, and senses from all of this Himalayan mountains worth of sinful reactions? तो बिना गुरु और कृष्ण की कृपा के कैसे हम अपने आप शुद्ध कर पाएंगे इस हिमालय पर्वत जैसे कलमशों से? So this is how to get to that platform. ये है वो तरीका जिससे आप उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। You like this discussion? आपको ये चर्चा पसंद आई? I didn't talk about the heavy lashes yet. मैंने अभी तक जो है भारी मारों की बात नहीं शुरू की I है। know that's scaring you. मुझे पता है वो आपको थोड़ा डरा देता है, But that's also mercy. लेकिन वो भी एक कृपा है That's also good for us. और वो भी हमारे लिए अच्छा है। That will also hopefully educate us. और आशा है वो हमें कुछ सिखाएगा। So Krishna Bhakta means Shuddha Bhakta, Premi Bhakta. तो कृष्ण का भक्त का मतलब होता है शुद्ध भक्त, प्रेमी। They know factually that Krishna is their friend वो तत्व में जानते हैं कि and कृष्ण उनके मित्र protector हैं, in all respects. उनके रक्षण करता है सभी And समय, he's able to do and undo anything for his devotee. और वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। So are we really that Shuddha Bhakta, Krishna Bhakta? तो क्या हम वैसे शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त हैं? Then why we're in so much anxiety? तो हम क्यों इतनी चिंताओं में हैं? Why so much fear and anxiety? क्यों इतना भय और चिंताएं हैं? Right? If we're really with Krishna, right? It says even fear is afraid of Krishna. कहते हैं अगर हम कृष्ण के साथ हैं, कहते हैं भय खुद कृष्ण से भय खाता है। So Vaikuntha means no fear, no anxiety. वैकुंठ का मतलब होता है कोई भय, कोई चिंता नहीं। That means you're peaceful, you're happy, you're satisfied. इसका मतलब आप शांत, आप सुखी, आप संतुष्ट रहेंगे। So we're Krishna Bhaktas. Krishna is our protector. हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण हमारे रक्षण करता So है। why the obsession with fear and तो anxiety? क्यों इतना भय और चिंता से हम परेशान रहते हैं? Who's protecting who? कौन यहाँ किसको बचा रहा है? We're thinking we have to protect ourselves. हम सोच रहे हैं हमें खुद को बचाना है। And so we're Krishna Bhakta. Of course Krishna is our और protector. हम कह रहे हैं हम कृष्ण भक्त हैं, अवश्य कृष्ण हमें बचाएंगे। But do we factually realize that? लेकिन क्या हम तत्व में उसका हम समझ पाए हैं अभी तक? Do we factually realize that Krishna is our best friend? क्या हम तत्व में समझ पाए हैं कि कृष्ण हमारे सबसे श्रेष्ठ And मित्र that हैं he's our protector? और वो हमारे रक्षण If करता we है? factually realize that, there'd be no fear and anxiety. तो अगर हम तत्व में उस बात को साक्षात्कार करेंगे तो कोई भय चिंता You're हमारे with अंदर नहीं Krishna, रहेगी। then you're in Vaikuntha. तो अगर आप कृष्ण के साथ हैं इसका मतलब आप वैकुंठ में No हैं, fear and anxiety. जहाँ कोई भय, कोई चिंता नहीं होती। They know Krishna can do and undo और anything. पता है कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। And then if he's not undoing, that means he wants us to go through that. और अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम चाहते हैं कि वो हम उस That परिस्थिति means से that's गुजरें, also good for me. इसका मतलब वो भी मेरे लिए अच्छा है। So what's the problem? तो समस्या क्या है? But Maya said, no, this is bad. लेकिन माया कहती This नहीं, ये बहुत is बुरा going to be a problem. बहुत समस्या होने वाली है, I'll be completely worried. बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, परेशानी You got रहती to है, make a plan. हमें कुछ You योजना need बनानी a होगी, plan B. हमें एक प्लान बी चाहिए। Right? Yeah, Guru and Krishna gave you plan A, and we're calculating what is plan B. गुरु कृष्ण ने हमें प्लान ए दिया और हम सोच रहे हैं हम प्लान बी कैसे बनाएंगे। We're plan making for our exit strategy. हम योजना बना Just रहे in हैं case it's going to blow up, you know. कि हम कैसे बच के निकलेंगे, किसी तरह से अगर कुछ सब फटने लगा तो हम कैसे बच के बाहर आएंगे। Wasn't it when devotees went to Gorkashodas Babaji Maharaj, and I think some couple came, or one person came, and then he said, "Did you come with a return ticket?" तो मुझे याद एक बार कुछ भक्त गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास आए और उन्होंने पूछा क्या आप वापस जाने का अपना टिकट लेकर आए हैं यात्रा का। Right? You get that? He's brahmachari. He doesn't know what is return ticket. रिटर्न टिकट क्या He होता only came on a one-way ticket. है? वो केवल एक टिकट लेके आ गए, Krishna prema or better die. कृष्ण प्रेमा या मर जाए, दोनों में से। So then when they said no, I have also return ticket. तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने वापस जाने का टिकट बुक किया हुआ। Then Maharaj said, "You're not serious. तो महाराज ने कहा तुम गंभीर नहीं हो, You're not really serious. You came with a return ticket, तुम गंभीर नहीं हो, रिटर्न टिकट लेकर आए just in case." कि अगर कहीं बचने की जरूरत पड़ जाए।
Someone said to Srila Govinda Maharaj one time, "Oh, don't worry, Gurudev, Krishna will protect you." एक बार किसी ने श्रील गोविंद महाराज को कहा, गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण आपको बचाएंगे. And surprisingly, the Maharaj said, if he chooses, और बहुत ही अद्भुत बात है, महाराज ने कहा कि अगर वो बचाना चाहते हैं, that's up to him. तो ये उनके ऊपर है. So it's not like automatic. तो ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाएगा. Right? Not demanding and expecting. कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं करते वो कृष्ण से. We're trying our best, and if he chooses to give protection, then he'll protect us. हम अपना श्रेष्ठ करने का प्रयास करें. अगर कृष्ण चुनाव करते हैं रक्षा करने का, तो वो And of course, Krishna himself says that I will protect my devotees. और अवश्य कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ. And he never perishes. और उनका विनाश कभी नहीं होता. Why are we acting like we're going to die and we're going to lose everything? हम ऐसा क्यों नाटक कर रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे हाथ से सब चला जाएगा. It's World War III is coming. ये तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है. It's all theoretical, isn't it? ये सब हमारा ज्ञान ठीक है. Krishna Bhakt is always peaceful. कृष्ण भक्त हैं, हम हमेशा शांत रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं. Right? Oh, no fear and anxiety. कोई भय चिंता नहीं होती. And like with the first one hiding underneath the table. सबसे पहले हम टेबल के नीचे जाके छुपते हैं. Right, with the helmet on. हेलमेट लगा के टेबल के नीचे घुस जाते हैं. Do we get enough stored food here? कि हमने पर्याप्त खाना जमा करके रखा या नहीं? We might starve. हो सकता है हमें भूखा रहना, भूखमरी आ जाएगी. So we're assuming a lot. तो हम जरूरत से ज़्यादा खुद को समझते हैं. Right? Krishna's God, we're devotees, we're doing bhakti. कृष्ण भगवान है, हम भक्त हैं और हम भक्ति कर रहे हैं. Right? We're not fearful, we have no anxiety. हम भयभीत नहीं हैं, हमारे अंदर कोई चिंता Now नहीं we're है. desireless. और हम सारी इच्छाओं से मुक्त हो चुके हैं. Because we're bhaktas, we're devotees. हम भक्त हैं. Only Krishna. केवल कृष्णा. You only want Krishna? क्या आप केवल कृष्ण को चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते? You don't want a wife? आपको पत्नी नहीं चाहिए? Maybe. हो सकता है चाहिए. What do you think of all of this? क्या सोचते हैं आप इन सब के बारे में? I have to be careful because he keeps me in line, you know. मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि वो मुझे हमेशा Sometimes I get carried away, so कभी it's कभी not मैं a good keep me on the straight and narrow. कभी मैं थोड़ा भटक जाता हूँ तो मुझे सीधी रेखा में बनाए रखते हैं. Although kāmīs, jñānīs, yogīs fulfill their desires by performing all of these various activities, they're never satisfied. यद्यपि कर्मी, ज्ञानी, योगी बहुत सारे कार्य करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते. So Prabhupada said, you judge the thing by the results. प्रभुपाद कहते हैं आप फलों के आधार पे चीज का निर्णय कर If सकते we're हैं. filled with fear and anxiety, तो अगर आप अपने पूरी तरह से भय और plan चिंता making, और नित्य कोई ना कोई योजना बना रहे हैं, not really peaceful and और satisfied, असल में संतुष्ट या सुखी नहीं है, then how we can be pure devotee? तो कैसे हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं? Right? Are we satisfied? क्या हम संतुष्ट हैं? That's why many times I ask devotees, I said, are you satisfied? इसलिए मैं कई बार भक्तों से सवाल पूछता हूँ, क्या आप You know, संतुष्ट you're हैं? not listening, you don't want to take advantage of it, you think that everything is fine, you know, then I always ask them, are you satisfied? तो आप सुनना नहीं चाहते, इतनी सारी जानकारियों का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप सब इससे संतुष्ट हैं? And they were like, you know, वो कहते हैं हाँ. no, I said, no, really, are you satisfied? मैं कहता हूँ क्या असल में Are संतुष्ट you हैं really आप? satisfied with where you're at? क्या आप उस बात से संतुष्ट हैं जिस स्थिति में आप अभी हैं? No room for improvement? और कुछ बेहतर नहीं हो सकता आपके जीवन में? You're getting full fulfillment? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? Huh? I just saw a quote. You get a cold? You're going to put on some more warm clothes? It won't help. No? It's too cold air here, so I'm not feeling cold. So what's the alternative? That's gonna sit here from the corridor. You're going to go in the corridor and get warm? You want a pair of gloves? I do the same thing. मैं भी ऐसा करता हूँ गर्मी पाने के लिए कई बार. Sometimes the mind is disturbed. कभी-कभी मन परेशान होता है, Sometimes the body is disturbed. कभी-कभी शरीर परेशान होता है, Right? So many distractions. बहुत सारी चीजें हमें भटकाती रहती हैं. Then we get the mind, body disturbed, cannot hear anything. तो शरीर मन परेशान होता है, हम कुछ सुन नहीं पाते हैं.
then we're not satisfied. फिर हम संतुष्ट नहीं रहते हैं। So we have to ask, are we completely तो satisfied? हमें पूछना होगा क्या हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं? I remember when I would walk around in the temples, I would say, you know, I would say out loud because I'm very, how do you say, outspoken? Is that true? तो मैं जो मंदिर में जब मैं रहता था तो मैं बहुत खुल के बातें करता था। You think I'm the person who just keeps everything inside? कि मैं क्योंकि बहुत बड़बोला हूँ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति हूँ जो अपनी बातों को अंदर रखता हूँ। आपको लगता है कि मैं अपने भीतर की बातों को आपको सामने व्यक्त नहीं करता। My mother and father trained me to express myself. मेरी माता पिता ने मुझे शिक्षा दी है कैसे अपने आप को व्यक्त करना है लोगों के सामने। That has helped me and it's hurt me. तो कई बार ये मेरी मदद करता है, कई बार मैं मुसीबत में फंसता हूँ। तो वो एक लंबी कहानी है। Why was I talking about that? तो मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? I used to walk around the temple and say, where is the shelter? Where is the protection? तो मैं मंदिर में कहता था चिल्लाकर कि कहाँ आश्रय है, कहाँ रक्षण है। And devotees would get so mad at me, you know. और भक्त मुझसे इतने परेशान हो जाते थे। And it was like, because they had gurus and they felt, shelter and protection. क्योंकि उनके पास गुरु थे और वो ऐसे महसूस कर रहे थे उनको आश्रय है, उनके पास रक्षण है। And then I'd say to them, if you feel shelter and protection and you're completely satisfied, God bless you. और मैं उनको कहता था अगर आपको आश्रय मिल रहा है, आपको रक्षण मिल रहा है, अगर आप संतुष्ट हैं तो भगवान आपका भला करे। If I'm not feeling shelter and protection and I'm not happy with that, do I not have a right to express my own experience? तो अगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आश्रय रक्षण नहीं पा रहा हूँ और मैं उससे सुखी नहीं हूँ, तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं इसको व्यक्त करूँ आपके सामने? Do I not have that right? तो क्या मेरा ये अधिकार भी नहीं है? If you feel satisfied and sheltered and protected, great for you. अगर आप संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, आश्रय मिल रहा है, रक्षण मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। I'm not telling you that you should feel like me. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप भी मेरी तरह अनुभव कीजिए। I'm just telling you, I'm not feeling it. मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा I'm not experiencing मैं इसका अनुभव नहीं कर पा shelter and protection and peace and I'm not experiencing that. आश्रय, रक्षण, शांति ये सब अनुभव नहीं हो रहा मुझे। Not working for me. मेरे लिए काम नहीं कर रहा। So therefore I'm not satisfied. इसीलिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ। It's like if you need like 6 chapatis and someone gives you like 2 chapatis, जैसे आप 6 चपाती खाना चाहते हैं लेकिन कोई आपको 2 चपाती दे रहा है, तो क्या आप संतुष्ट हो पाएंगे? And then some skinny guy's like, well, 2 chapatis is very nice and has ghee on it, और कोई दुबला पतला आदमी कहेगा 2 चपाती बहुत अच्छा है, उसमें घी भी डाला है। That's okay. Are you happy with your 2 chapatis with ghee on it? तो मैं बोला ठीक है, अगर आप सुखी हैं अपने 2 चपाती उसमें घी मिल रहा है, तो हाँ मैं सुखी, मैं संतुष्ट हूँ। Well, I'm not. लेकिन मैं कहूँगा मैं नहीं, मेरे को 6 चपाती चाहिए। That's when I'm going to be satisfied. तब मैं संतुष्ट रहूँगा। Krishna said, not too much, not too little. कृष्णा ने कहा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। Everyone has their golden middle, isn't it? सभी का अपना एक बीच का लक्ष्य है। What if I told you can only have 1 chapati? क्या होगा अगर आपको कहना होगा आपको बस 1 चपाती मिलेगा with no ghee और उसमें कोई घी नहीं होगा? Are you going to be satisfied? क्या तब आप संतुष्ट हो पाएंगे? So you mind your business and I'll figure out what I need to do. तो तुम अपना काम देखो और मैं देखूंगा कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या चाहिए। This is a personal philosophy, isn't it? क्योंकि ये एक व्यक्तिगत It's not like the collective whole, we're all feeling shelter and protection. ऐसा नहीं कि कोई सामूहिक बात है कि हाँ सबको आश्रय रक्षण महसूस हो रहा है। It's individual. ये एक व्यक्तिगत So if your soul is not satisfied, that means something's missing. तो अगर आपकी आत्मा संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब कुछ कमी है। Now it's our duty and responsibility to try to understand what's missing. तो अब हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है ये पता लगाना कि क्या कमी है। This is what is missing. और ये वो चीज जो कमी है। So if someone can't help me to understand that, no one's going to be satisfied. तो अगर कोई मुझे समझने में मदद नहीं करेगा इस बात को, इसके अलावा कोई सवाल संतुष्ट कोई भी नहीं हो सकता। If you're satisfied thinking you're already a pure devotee and you have no anxiety and no desires, God bless you. तो अगर आप सुखी हैं, संतुष्ट हैं, आप एक शुद्ध भक्त हैं, आपके अंदर और कोई इच्छा नहीं है इंद्रिय भोग करने की, तो आप बहुत अच्छा है आपके लिए। You're happy with your theoretical sentimental understanding, then God bless you. तो अगर आप सुखी हैं अपने मौखिक या भावुकता वाले समझ के साथ, तो आप बहुत अच्छा है आपके लिए। I always think like theoretical is like
like you order a pizza, right? मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मौखिक जो ज्ञान है, जैसे आप कोई पिज्जा आपने And they मंगवाया deliver the box of pizza. और वो पिज्जा का बॉक्स And then it has a picture of the pizza on the top of the box. और उस पिज्जा के बक्से के ऊपर में पिज्जा की तस्वीर बनी हुई है। Right? And then you open the box, there's no pizza there. और जब आप बक्सा खोलते हैं उसके अंदर कोई पिज्जा ही नहीं है। And then you're like chewing on the cardboard, you know? और फिर आप बक्से को ही खा रहे हैं। That's a theoretical. ये है This is मौखिक। like a pizza. जैसे ये पिज्जा It's a है, picture of the pizza, पिज्जा की तस्वीर बनी है उस बक्से में, but there's no real pizza. लेकिन असल में कोई पिज्जा है नहीं उसमें। So if you know, it's food for your soul. कह रहे हैं आपकी आत्मा को भोजन मिलेगा। I don't know if it's satisfying my soul. मुझे पता नहीं इससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। So you know, I'll be the one to say when my soul is satisfied. मैं बताऊंगा कि कब मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल रही I है। don't need you to tell me whether my soul is satisfied or not. आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल रही With है। all due respect, Prabhu, पूरे सम्मान के साथ जी, प्रभु, माता जी, Maharaj, महाराज, that's individual. ये एक सभी की व्यक्तिगत अनुभव की बात है। Right? So if we're doing it properly, Krishna is happy, we're going to be Krishna happy. It's as अगर simple as हम that. सही तरीके से करेंगे, कृष्णा उससे संतुष्ट होंगे, कृष्णा सुखी होंगे, हम सुखी और We're not संतुष्ट peaceful होंगे। and happy means we're doing something wrong. अगर हम शांत और सुखी नहीं है, इसका मतलब हम कुछ And गलती then कर it's रहे हैं। up to us to figure out what am I doing wrong. और ये हमारे ऊपर है कि हम देखें हम क्या गलती कर रहे And हैं। if you don't know and you ask somebody and they can't help you, अगर आप नहीं जानते, अगर आप किसी को पूछ रहे हैं और वो भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, what's the problem, Murali? Just chant. मुरली क्या समस्या है? केवल जप करो, Chant, dance, take prasad, go back to God. What's the problem? कि जप करो, नाचो, प्रसाद लो, भगवत धाम वापस जाओ। समस्या क्या है? So maybe someone else will be like, oh, okay, you तो कोई और जो होगा, chant, dance, and take prasad, go back to God. ओ जप करूंगा, नाचूंगा, प्रसाद दूंगा, भगवत धाम जाऊंगा। But it's not convincing me. लेकिन उसने इस बात ने मुझे आश्वस्त नहीं किया। Satisfying. मैं संतुष्ट नहीं था। If you have questions and someone answers your question, but they don't satisfy you, then you should be satisfied. तो अगर आपने कोई प्रश्न पूछा और किसी ने आपको उत्तर दिया और आप उससे उत्तर में संतुष्ट नहीं हुए, तो क्या आपको संतुष्ट होना चाहिए उससे? Krishna knows what is your question. कृष्णा को पता है आपका You're प्रश्न asking क्या a है। sincere question to Krishna. Please help me to understand this. अगर आप एक निष्ठता से कृष्णा से पूछ रहे हैं, मेरी मदद कीजिए इस बात को So समझने Krishna के लिए, can't answer your तो question. क्या कृष्णा आपके सवाल का उत्तर नहीं दे He सकते? wants to answer your वो question. आपके सवाल का उत्तर देना चाहते हैं। So if someone cannot satisfy and answer your question, that means Krishna is not there. तो अगर कोई आपके प्रश्न को उत्तर नहीं दे पा रहा, आपको संतुष्ट नहीं कर पा रहा, यानी कि कृष्णा वहाँ मौजूद नहीं है। And you're like, well, that really isn't my question. और आप कहेंगे ये असल में मेरा प्रश्न नहीं था। Right? I've heard people ask question and then the Maharaja get furious. मैंने ऐसा भी देखा था कि किसी ने सवाल पूछा और महाराज पूरे गुस्से में आ They गए start chastising the person. और उस व्यक्ति को डांटने लगे। I remember I was distributing books and I brought one boy back to the temple. और मुझे याद है कि मैं एक बार जो है किताबें बांटने के लिए गया और एक लड़के से मिला और उसमें He मंदिर was लेकर a आया। really smart guy. और वो बहुत ही चालाक लड़का था। He was going to Brown University, nice Ivy League school. तो वो ब्राउन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय जो है जो वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे पढ़ाई करता था। And his father was a big-time lawyer in New York City. और उनके पिताजी एक बहुत बड़े वकील थे न्यूयॉर्क This is शहर like में। a smart kid, you तो know. बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। So we got in. Please come back to the class. Spend a couple days here. Check it out. You know. तो मैंने कहा आप आइए, क्लास में आइए और कुछ दिन हमारे साथ रहिए और देखिए आपको कैसा लगता है। So then one Maharaj was giving a class तो एक महाराज एक प्रवचन दे रहे थे in Boston, बॉस्टन में। and then this person asked the Maharaj a question. तो उस लड़के ने महाराज से सवाल पूछा And then when he asked the Maharaj a question, the Maharaj tried to answer the question, and I could see that the boy was not happy with the answer. और जब उस लड़के ने सवाल पूछा और महाराज ने उनको उत्तर दिया तो मैं देखा उस लड़के को संतुष्टि नहीं मिली महाराज के उत्तर से। And then the boy is saying like this, you know, and then
then he said yes, but because he was simple, he was saying that's not really answering my question. और क्योंकि वो थोड़े सरल थे तो उन्होंने सवाल करना शुरू किया कि असल में मेरे सवाल का मुझे उत्तर नहीं मिला। And I really would like to understand this thing better. और वो कह रहे थे मैं थोड़ी और बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ। So many times the Maharaj is trying to answer the question and the boy is not satisfied. और कई बार महाराज ने उत्तर देने का प्रयास किया लेकिन उस लड़के को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। And then some other senior devotees start trying to answer his question. और फिर कुछ और वरिष्ठ भक्त जो मौजूद थे उनके प्रश्न का उत्तर देने का वो प्रयास करने लगे। And he's still not satisfied. और तब भी वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा। And I'm sitting there like I actually understood the answer to the question. और मैं वहाँ बैठा था और मुझे समझ में आ रहा था कि उनके प्रश्न का उत्तर क्या है। But because I was relatively new, I didn't say anything. तो क्योंकि मैं वहाँ नया था तो मैं कुछ कह नहीं रहा था। But I understood what he was asking. लेकिन मैं समझ गया था कि वो क्या पूछना And I चाहते think थे। I understood how to answer the question. और मैं सोच रहा था कि मैं समझता हूँ उनके प्रश्न का But उत्तर they क्या couldn't है। understand him. लेकिन वो तो उनको समझ ही नहीं पा रहे थे। And neither they could answer his question. और ना ही उनके प्रश्न का उत्तर दे पा रहे थे। And then they got so angry, so frustrated. और उसके बाद सभी इतने गुस्सा हो गए, And इतने then उससे they हताश हो started गए। chastising the boy. और फिर उस लड़के को सब डांटने लगे। You're like puffed up. तुम्हारे अंदर अहंकार है। And this guy's like, you know, I'm just asking, like, I'm just trying to understand something, you और वो know. लड़का तो मैं तो यहाँ बस कुछ समझने के लिए आया था। It was crazy. And I got so frustrated, you know. और मैं उससे इतना हताश हो गया। And I was trying to, you know, be cool, you know. और मैं जो थोड़ी सी नरमी बरतने का प्रयास कर रहा था। But I felt like it was like abusive, you know. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है। And you know, he's a nice person, he's a smart kid who just came, right? So why are you abusing this guy? He's brand new, you know. क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है और एकदम बिल्कुल नया आया है तो उसको क्यों डांटा जा रहा है इस तरह से? So I said something like, what he's trying to say. तो मैं ऐसे आया और वो ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं। And I was trying to be, you know, respectful, but I was so uptight, you know. तो मैं सोचा थोड़ा सम्मान से बोलूँगा लेकिन मैं गुस्से से मैंने बोला। Because like you guys don't understand him. क्योंकि आप लोग सभी इनको समझ नहीं पा रहे Can't हैं। answer his question. उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे And हैं। then because everybody knows that, और क्योंकि सभी इस बात को समझ भी पा रहे हैं। all you can do is start attacking this अब guy. एक ही मात्र सभी कर सकते हैं उसके ऊपर हमला करो। This is ridiculous. ये सब बकवास है। Then he's like, all right, whatever. Then we went for the prasadam. और फिर जब प्रसाद देने के लिए गए And then I just caught the boy. I said, you know, was this your question? और फिर मैंने उस लड़के को पकड़ा और उनको पूछा कि क्या आपका ये प्रश्न था? उसने कहा हाँ बिल्कुल यही मेरा प्रश्न था। One way, you know, you can look at it, it's like this, and I gave him like some simple answer. और मैंने कहा कि आप इसको ऐसे देख सकते हैं और मैंने उनको कुछ एक सरल उत्तर दिया। And he became happy. और फिर वो सुखी हो गए। And he was like, oh, okay, that makes sense. मैंने कहा हाँ ये बात सही है। So he became pacified. तो वो थोड़े संतुष्ट हो गए। And then this other senior devotee goes by. और फिर बगल से जो वरिष्ठ भक्त He says, गुजर well, that's not the only answer to that question. यही एकमात्र उत्तर नहीं है इसके सवाल का। And I'm just like, well, at least I could give him one. मैंने कहा कम से कम मैं एक तो दे पाया। I couldn't help myself. You know, please excuse me. मैं खुद को रोक नहीं That's पाया। why I say I get in trouble sometimes. इसलिए मैं कहता हूँ कई बार मैं मुसीबत में फंस At least, maybe there's more answers. At least I could give him one. मैंने कहा हो सकता है बहुत सारे उत्तर होंगे लेकिन एक तो मैंने दिया कम से कम। You couldn't even give him one. आप लोग तो सब मिलके एक भी नहीं दे पाए। So this is very personal. तो ये बहुत एक व्यक्तिगत अनुभव होना चाहिए। And because it's such a risk, और क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है and because we're so new, और हम इतने नए हैं and because it's so subtle, और ये इतना सूक्ष्म है and then the how do you call it? The stakes are like heaven and hell, life and death, you know. और खतरा जो है बहुत जमीन आसमान का है और स्वर्ग और नरक का है। You know, it's like you get it right, you go to Vaikuntha. You get it wrong, you go to hell. You अगर आप know? सही समझे वैकुंठ जाएंगे, गलत समझे नरक जाएंगे। Right? Like, shouldn't I be satisfied if the stakes are heaven or hell? तो क्या हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए अगर हमारे पास खतरा जो है स्वर्ग या नरक का हो? Just be convinced, you know. कि बस अब आश्वस्त रहिए। It's food for your soul. आपकी आत्मा को भोजन मिल रहा है। Oh, all right. ठीक है। You don't feel the shelter and protection? आपको आश्रय रक्षण महसूस नहीं हो रहा? Not really. नहीं हो रहा असल में।
So I just prayed to Krishna. I prayed to Krishna Prabhupada. You know, I need shelter, protection. I need mercy. तो मैंने कृष्णा से answer my question. प्रभुपाद से प्रार्थना की कि मुझे आश्रय रक्षण चाहिए, मुझे कृपा चाहिए, मेरे सवालों का जवाब चाहिए. I need a real guru. मुझे एक असल गुरु चाहिए. And just after that, by Prabhupada's mercy, then I met Srila Govindaswami. और उसके कुछ समय बाद ही प्रभुपाद की कृपा से मुझे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज मिले. And Maharaja is such a premi bhakta. और महाराज ऐसे प्रेमी भक्त हैं, Such a pure, by a medium of Krishna. ऐसे शुद्ध कृष्णा के शुद्ध माध्यम हैं That if I even thought some question, कि मैं कुछ सवाल ही नहीं सोच पाया Maharaj would answer the question. कि महाराज तो पहले ही उत्तर दे देते थे. Without my raising my hand, without my trying to explain myself to him. कि मैं अपना हाथ भी उठाता या कुछ उनको बताने का प्रयास करता. Spontaneously. अपने आप ही. Because Krishna knows what is your question and your doubt. क्योंकि कृष्णा को पता है आपके क्या संदेह, आपके क्या प्रश्न हैं. And Krishna is coming here and sending the devotees and sending the shastra to help us to understand what to do. और कृष्णा यहाँ आ रहे हैं, अपने भक्तों को भेज रहे हैं, शास्त्रों को भेज रहे हैं हमारी मदद करने के लिए, चीजों को समझ पाने के लिए. So if you sincerely want to know and you're praying to Krishna, please give me intelligence, understanding. You said how to come to you. That I need that. Krishna knows that. अगर आप कृष्णा को एक निष्ठा से समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनके तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, तो कृष्णा इस बात को समझ जाएंगे. And then Gurudev would just automatically, somewhere in the class, he would answer the question. अपने आप ही क्लास के कहीं किसी भी दौरान मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर Sometimes immediately, कभी-कभी तुरंत उत्तर मिलता था, sometimes in the middle of the class, कभी-कभी क्लास के बीच sometimes में, at the end of the class, कभी-कभी क्लास के अंत में, somewhere, कहीं पे तो every day, हर दिन I would get my answer. मुझे मेरे उत्तर मिलते थे. And sometimes Gurudev would say, that's the answer to your question. और कई बार गुरुदेव ऐसा कहते थे, तुम्हारे प्रश्न का ये उत्तर है. I didn't even ask him, right? और मैंने तो उनको पूछा तक नहीं था. But Krishna made him speak the truth. लेकिन कृष्णा ने उनको वो सत्य बुलवाया. This is what you're trying to understand. क्योंकि कृष्णा को पता है कि आप ये समझने का प्रयास कर रहे हैं. This is your doubt. This is what you're trying to overcome. ये आपका संदेह और इससे आप बाहर निकलने का प्रयास That's कर the रहे हैं. duty, responsibility of bona fide guru. और यही कर्तव्य, दायित्व है, जिम्मेदारी है प्रमाणिक गुरु का. And then he doesn't understand you, can't answer your question, and then you're not satisfied, and then he's like angry at you because you're not satisfied. तो वो आपको समझ नहीं पा रहे. It's your problem. You know? अगर वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, अपने प्रश्नों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसके बाद वो आपसे गुस्सा हो रहे हैं, आपको डांटने का प्रयास कर रहे हैं. Why are you getting angry? आप क्यों मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं? So anyway, sometimes we have to go through all of these things to learn. तो कई बार हमें इन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है ताकि हम खुद सीख सकें. So yes, any questions, points so far? कोई प्रश्न या कोई बात? My friend, I didn't talk about heavy lashes of Maya. तो मेरे मित्र, हमने आज माया के भारी मार के बारे में बातें नहीं की. Thank you. What is that? Thank you. Krishna didn't allow me. कृष्णा ने मुझे बोलने ही नहीं दिया. I spoke about it before you came. और आपके आने से पहले ये सब बातें की मैंने. And then as soon as you came in, it became all about love. और जैसे आप आए, सारे प्रेम की बातें शुरू हुई. Crying for Krishna. कृष्णा के लिए रोने के लिए. Right? Isn't that what it's all about? क्या यही सब कुछ नहीं है? I better be careful. I don't want to get in trouble. मुझे थोड़ा सावधान होना चाहिए. मैं Everybody's very sensitive all of a sudden. ऐसा नहीं है, बहुत सावधान हो जाते हैं. You're talking to me. मुझसे बात कर रहे हैं. Sometimes one time I was telling somebody something like little strong way, you know. एक बार मैं किसी एक को बहुत सख्ती से बात कर रहा था. And then the husband told me that, you know, wow, you know, you really had, my wife was so nervous how you were speaking to her, you know. और उनके पति ने आके मुझसे कहा कि आप इतनी भारी तरीके से मेरी पत्नी से बात कर रहे थे, ये बहुत मुझे She was प्रभावित like किया. really freaking out. वो पूरी सहम गई थी पूरी तरह से. And I was like, what are you talking about? और मैंने कहा कि क्या बात कर रहे हैं आप? He said, yeah, you know, you were looking right at her and you were telling all of this thing, you know. I said, I wasn't talking to her.
तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पत्नी को देख के उनको प्रचार करने का प्रयास कर I रहे was थे। talking to the lady behind her. मैंने कहा मैं उनसे नहीं बात कर रहा था, उनके And this पीछे जो lady, बैठी थी she मैं was उनसे बात कर shaking रहा and था। like completely disturbed, and और it वो wasn't जो even for her, you know. और वो महिला जो थी पूरी तरह डर रही थी, पूरी परेशान थी, और मैं तो उनसे बात भी नहीं कर रहा था, मैं तो उनके पीछे वाली महिला से बात कर But रहा I guess she was meant to hear that. था। लेकिन मुझे लगता है शायद उनको सुनने की Because जरूरत then थी। she woke up and she was like, I gotta be careful. You know? वो जाग गई और समझने लगे मुझे अब थोड़ा सावधान होना चाहिए जीवन में। Gurudev saying I'm not serious. गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं सावधान, मैं गंभीर नहीं हूँ। So she took it personally. तो उन्होंने उसको व्यक्तिगत रूप से ले But लिया। in that case, it helped her. तो किस तरीके से उसने उनकी मदद की? Any points or questions? Anything? कोई प्रश्न या कोई बात? Yeah. So one person is asking, Maharaj, when I'm in bad consciousness, What? he's asking, when I'm in bad consciousness, then my mind goes out of control. You're always in bad consciousness. कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि महाराज मैं जब खराब चेतना में होता हूँ तो मेरा मन नियंत्रित नहीं रहता। तो गुरुदेव बता रहे हैं तुम हमेशा ही खराब चेतना में रहते हो। You mean when you realize you're in bad consciousness? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप जब अनुभव कर पाते हैं कि आप खराब चेतना में हैं। So you finally realize you're in bad consciousness, and then what happens? और अंत में आपको अनुभव हुआ कि आप खराब चेतना में, उसके बाद क्या हुआ? So then I'm unable to ask Krishna for help. So how do I always ask Krishna to guide me? You say, I'm in really horrible consciousness right now. तो This is not good. तो कह रहे हैं कि उस समय मैं कृष्णा से प्रार्थना नहीं कर पाता, उनसे मदद की मांग नहीं कर पाता। तो गुरुदेव बता रहे हैं तब हमें कहना चाहिए कि मैं बहुत ही खराब चेतना में हूँ और ये मेरे लिए This अच्छा is नहीं a है। horrible situation. ये बहुत ही भयावह स्थिति है। I need a lot of mercy मुझे बहुत कृपा की जरूरत है because this is not good. This is dangerous. क्योंकि ये अच्छा नहीं है, बहुत खतरनाक It's है, unsatisfactory, ये असंतुष्टि ला रहा है। unacceptable position or condition to be in like this. इस तरह की परिस्थिति या अवस्था को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। So we need to clean it up. तो हमें इसको साफ करने की जरूरत है। I remember one time in Bhubaneswar, I told devotees a story that after one heavy duty cleansing class from open heart surgery by Maharaj, तो मुझे याद है एक बार भुवनेश्वर में एक प्रवचन के बाद बहुत भारी भरकम प्रवचन हुआ जब महाराज ने हमारे ऊपर सफाई की और हमारे हृदय का सर्जरी किया। we're getting into this topic, I have to be careful. तो हम उस विषय में घुसने जा रहे हैं, मुझे थोड़ा सावधान होना चाहिए। He's like a fact checker from YouTube, you know. YouTube में जो है क्या चीजें डालनी चाहिए उसको सत्य को स्थापित करते हैं। They may kick me off, you know. मुझे हो सकता है YouTube से बाहर निकाल दिया जाएगा। Then you have to like spell words differently. तो जो है आपको शब्दों को अलग तरीके से उच्चारण करना होता है। Like मार हलाल करने की टेक्निक। so Gurudev, you said you came from Śrīmad-Bhāgavatam.Swami, right? आप कह रहे हैं कि आप श्रील गौर गोविंद से महाराज से प्रभावित होकर आए हैं। Do you know what is saying about being a sadhu? आपको पता है कि वो साधु के बारे में क्या बातें करते हैं? Sadhu साधु जो काटते हैं, means a cutting. जो काटते हैं। You don't like cutting? आपको कटाई अच्छी नहीं He लगी? wants to enjoy the cake without cutting the cake, you know? आप केक खाना चाहते हैं, बिना केक को काट देना। You gotta cut the cake. आपको केक काटना होगा। So what happened? Saying Gurudev, cutting is not always painful. It's not always painful? तो Is वो it कह रहे हैं painful for you? कि जो काटना हमेशा दर्दनाक नहीं होता। गुरुदेव बता रहे हैं कि क्या आपको दर्द होता है? आप हंस रहे हैं, It's not painful today? तो क्या आपको दर्द नहीं हो रहा? Because you're smiling, it can't be that painful. क्योंकि आप मुस्कुरा रहे हैं तो अवश्य उतना दर्द नहीं हो रहा। Other day it was a little painful. दूसरे दिन थोड़ा दर्द हो रहा था, Right? Because false ego got a little pinched, you know? क्योंकि मिथ्या अहंकार को थोड़ी चुभ रही थी। I know, because I went through the same thing with और Śrīmad-Bhāgavatam.Swami. मुझे पता है क्योंकि मैं भी इसी अनुभव से गुजरा हूँ श्रील गौर गोविंद से Many महाराज। times he's calling it pinching. I'm talking like, I'm thinking it's like a spear hitting me in the heart, you know? He's calling it pinching. चुभने के बाद कहते थे, मुझे ऐसा लगता था मेरे छाती में किसी ने भाला फेंक दिया हो।
So from his point of view, it's just pinching, and I'm saying it's open heart surgery. वो कहते थे कि चुभ रहा है और मैं कहता था मेरे हृदय की सर्जरी की जाए. Cutting the heart, every day going for open heart surgery. मेरा दिल काट कर उसके हर दिन जो है उसका सर्जरी किया जा रहा है. And he said, I know my words are a little pinching you. कहते थे मुझे लगता है मेरे सब आपको थोड़े चुभ रहे हैं. Pinching. चुभना. It's beyond chopping technique. हलाल करने की तकनीक से भी ज़्यादा लगता था. I remember after some of the class, a flatbed would go by. I just lay on the back of the flatbed. It just took me all. कई बार ऐसा प्रवचन जब खत्म होता था, तो मैं सोचता था कि पूरा जो फ्लैट बेड रिक्शा आता है मैं उस पे लेट के जाऊँगा. They give prasad. It's like rice, तो वो प्रसाद and chapatis with no ghee. उसका प्रसाद हम लेने जाते थे. पहाड़ के जैसा राइस लेते थे, दाल और उसमें कोई दो चपाती कोई घी नहीं. I'm like, do you have any sabji or anything? मैं पूछता था कि कोई सब्जी वगैरह है आप लोगों के पास? No, just this rice. बस चावल है. A mountain of rice. पहाड़ बनाते थे हम चावल. So after you go for surgery, sometimes you want to go eat something. कभी आप सर्जरी से गुजरते हैं, आपको जाके कुछ खाना चाहते हो. Like it was heavy. Let's go eat something. बहुत भारी हो गया, थोड़ा जाके कुछ खाना चाहिए. So that was like that after every class, तो ये हर क्लास के प्रवचन के बाद I don't even care if it's rice, चलो जाके आप कुछ खाते हैं. Third class rice, no problem, कि घटिया क्वालिटी का भी राइस हो, कोई समस्या नहीं. Some dal with, yellow, some water. कुछ दाल है, दाल नहीं बस पीला पानी है वो. I was like, I would ask them, is there any beans? पूछता था दाल भी है इसमें सिर्फ पानी है. Like can you scoop a little, like throw a couple beans on it? मैं कहता था थोड़ा अंदर से निकाल के दीजिए, दाल भी थोड़ा आएगा. And they're like, no, just be quiet. नहीं Okay, yellow water's good also. पीला पानी भी बहुत अच्छा है. At least it's warm, कम से कम गरम दे At रहे least हैं. it's warm. कम से Stop कम गरम complaining, है. और शिकायत मत कीजिए. So then fill up, हम पूरा भरते थे, पूरा भरते थे. right? And then just come out on the street and look for a flatbed. और फिर हम रास्ते में निकल के ये पूरा फ्लैट बेड रिक्शा कहाँ मिलेगा देखते थे. Everyone knew me. They just I didn't even have to tell them my address. They just dropped me right off. सारे रिक्शा वाले मुझे जानते थे, किसी को मेरा एड्रेस बताना नहीं होता. वो बस लेटता था और मुझे लाके ले जाते थे. They're like, how was the class? I was like, मेरे क्लास कैसा था? I'm making a joke of it, but it's really the truth what I'm telling you. तो मैं इसको मजाकिया तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये बिल्कुल सत्य बातें हैं. So then somehow I get home, climb up the stairs, open the door, just fall on the mattress, किसी तरह से मैं सीढ़ियों में चढ़ के for 4 hours, किसी तरह मैं सीढ़ियाँ चढ़कर दरवाजा खोलता था और बिस्तर में जाके गिर जाता था. 4 घंटे तक मैं पड़ा रहता Come था. on, after open heart surgery and that much rice, what else are you gonna do? हृदय के सर्जरी के बाद इतना चावल खाने के बाद और क्या करेंगे आप? So, this was a daily process. ये हमारा रोज का काम हुआ करता था. Are you relishing this discussion? क्या आपको आनंद मिल रहा है ये चर्चा से? Are you praying for me? क्या आप मेरी प्रार्थना कर रहे हैं? Why did this boy have to go through all of that? क्यों इन लड़कों को इतना सब चीजों से गुजरना I could पड़ा? have just cried for Krishna and avoided the whole thing, तो बस कृष्णा के लिए रो देते, सब कुछ मिल जाता है. Why you have to make it difficult, क्यों इतना कठिन बनाना पड़ा आपको? So everyone has, they're reading a couple books of Srila Bhaktivedanta.Swami, but they don't know what it really was like sitting there and going through that purification process. बहुत सारे लोग श्रील गौरव से महाराज की किताबों को पढ़ते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते थे कि कैसे इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरना है. And of course he was very funny and it was entertaining and interesting, but it was still a frying pan many days. तो कई बार बहुत हंसाते थे और बहुत अच्छी चीजें बताते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि हम जलते तवे में बैठे हैं. Have you ever sat in a frying pan? कभी आप क्या जलते तवे में बैठे हैं? No? नहीं. Oh, you just wait. आप इंतजार कीजिए. He's like, how do I get out of here? निकलना कैसे होगा मुझे?
He's calculating. How do I get out of here? और वो सोच रहे हैं कैसे यहाँ से He's निकलना gonna है start मुझे। talking heavy lashes. I can feel it. You know? वो भारी मार्ग की बात करने वाले हैं, मुझे इसका This महसूस हो रहा है। Maharaj cannot not say heavy lashes. तो महाराज रोक ही नहीं पाता है खुद को कि भारी मार्ग के बारे में बात किए बिना। Oh, Krishna. I'm sorry. Please excuse me. मुझे क्षमा कीजिएगा। But how are all these desires going to come out? ये इच्छाएं हमारे अंदर से बाहर कैसे आएंगी? How's all the sinful reactions going to get purified? ये सारे पाप कर्म की इच्छाएं शुद्ध कैसे होंगी? You're waiting for Harry Potter's little stick? क्या आप कल्पना कर रहे हैं कि हैरी पॉटर जादू की छड़ी लेकर आएंगे? Abracadabra, you're free from all of your sinful reactions. आब्राकडाब्रा, सारे पाप कर्मों के फलों से आप मुक्त हो गए। Now cry for Krishna. अब आप कृष्ण के लिए रोइए। Is it so easy, cheap, you क्या know? इतना आसान, इतना सस्ता तरीका है? I was joking about this stick, you know? तो मैं इस छड़ी के बारे में मजाक कर रहा था। Then I went to see some Maharaj, right? फिर मैं किसी महाराज से मिलने गया। He was calling for something, और फिर वो किसी चीज के लिए बुला रहे and थे। then the servant brought a stick, और फिर उनका जो सेवक है वो एक छड़ी लेकर आया। and kind of little fancy और stick. बहुत सुंदर छड़ी And he था। just started tapping me on the head. I was like, फिर वो महाराज सबके सर में वो मारने लगे। वाह, this is great. बहुत अच्छा है। I wish it was that easy, you know? काश मैं सोच रहा था काश What's ये मेरे लिए the इतना problem, आसान हो। Murali, you know? Just chant Hare Krishna, समस्या क्या है take some मुझे? prasadam, get a couple taps on your head and go back to Godhead. Why are you making this complicated? हरे कृष्ण कीजिए और नाचिए, प्रसाद लीजिए, सर में छड़ी लगाइए और भगवत धाम वापस चले जाइए। But Maharaj, the Himalayan mountains of sinful reactions is still bothering me. महाराज ये हिमालय पर्वत जैसे पाप कर्म के फल हैं, अभी भी मुझे परेशान कर रहे हैं। It's not going away. मुझसे जा ही नहीं रहा है। It's like chasing me, you मेरे know? पीछे लगा पड़ा है। It's haunting me. मुझे डरा It's रहा है, torturing मुझे me. प्रताड़ित कर रहा है। Can you do something about that? क्या आप इसका कुछ कर सकते हैं? Maybe you didn't use the stick properly. मुझे आपने ठीक से छड़ी नहीं घुमाई है। You see how irreverent I really am? देखिए आप मैं This is कितना really bad. This has कितना मैं- become chronic. मैं कितना बयान करता हूँ, मेरे अंदर ये बहुत बड़ी Chronic समस्या है। condition now. अब ये समस्या मेरी बहुत बड़ी हो चुकी है। Who's going to help me now? अब कौन मुझे बचा पाएगा? Preach to me. Preach to me. मुझे थोड़ा प्रचार कीजिए। He needs a guru, you know? इनको एक गुरु चाहिए। Okay, bring a guru to help me. तो ठीक है, गुरु लेकर आइए मेरी मदद करने के लिए, कोई समस्या नहीं। I'll accept their good advice. मैं उनकी अच्छी सलाह स्वीकार करूंगा। He wants to be my guru. वो मेरे गुरु बनना चाहते हैं। He thinks I'm not preaching properly. वो सोचते हैं मैं सही तरीके से प्रचार नहीं कर रहा हूँ। Right? They think, why don't you preach like Śrīmad-Bhāgavatam? कह रहे क्यों आप श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की तरह प्रचार नहीं कर And रहे? I said, I am. अब मैं कहा मैं कर रहा हूँ, But because they just read a few books, तो क्योंकि they उन्हें don't understand the whole process. बस कुछ किताबें पढ़ी हैं तो वो पूरी प्रक्रिया को समझते नहीं हैं। You know, why can't you just be like a simple, humble sadhu, you know, like your guru? Why do you have to behave like this? You क्यों know? आप एक सरल विनम्र साधु की तरह व्यवहार नहीं करते हैं? अपने गुरु की तरह आप ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं? You know, your guru wasn't like that. कि आपके गुरु तो ऐसा नहीं करते थे। And, you know, so they're understanding, seeing only one part. तो वो समझ रहे हैं और देख पा रहे हैं उनके केवल एक भाग को। What is chopping technique? ये हलाल करने की What तकनीक is क्या open थी? heart surgery? ये हृदय की सर्जरी क्या थी? What is sitting in a frying pan to purify your sinful reactions? What does that mean? ये जलते तवे में बैठना अपने पाप कर्मों को शुद्ध करने के लिए, उसका क्या अर्थ है? How else you think it's going to come out of it? आप क्या सोचते हैं और कौन तरीके से ये सब चीजें करते हैं? You think it's a cheap process, easy process? आपको लगता है इतना सस्ता तरीका, आसान तरीका है? Many times Gurudev said, although I'm coming to give Krishna prema, और कई बार गुरुदेव कहते थे कि यद्यपि मैं कृष्ण प्रेम देने आया हूँ, how many people are really there? How many people are really that serious for Krishna कितने prema? लोग उतने गंभीर हैं कृष्ण प्रेम पाने के लिए? Coming to give it to everybody, वो आए सभी को देने के लिए, but how many are really interested in it? लेकिन कितने लोगों को रुचि है उसको पाने And then में? he said, very few. और उनका बहुत कम। And then he said, why?
और फिर उन्होंने कहा ऐसा क्यों? Because Gurudev is too heavy. क्योंकि गुरुदेव बहुत भारी हैं। The information is too heavy. It's too demanding. जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा मांग कर रहे People cannot tolerate it. They don't like it. और लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, वो पसंद नहीं करते थे। When I went there in beginning, Bhubaneswar, and then Gurudev said, I heard him say that you know your life doesn't belong to you anymore. तो जब मैं भुवनेश्वर गया गुरुदेव के प्रवचन में सुनने के लिए, तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा नहीं रहा। And I was like, did I just hear what I think I heard? और फिर मैं सोचा क्या मैंने सही सुना अभी? This person I just met, did he just say to me that my life doesn't belong to me anymore? जिन व्यक्ति से मैं कुछ दिन पहले मिला हूँ, वो मुझे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा नहीं रहा। And I was like, yeah, he really just said that. और फिर मैंने कहा हाँ, इन्होंने तो यही बात कही अभी। Now you don't belong to yourself. अब तुम खुद के नहीं हो। I don't belong to myself. अब मैं खुद का ही नहीं No, हूँ। now you belong to the Guru. अब आप गुरु के हो चुके हैं। Wow. मैंने कहा वाह। And you have to be prepared to die. और आपको मरने के लिए तैयार रहना होगा। Then you can get Krishna prema. तब आप कृष्ण प्रेम पा सकते हैं। So people are just taking it really cheap, really sentimentally. तो लोग बहुत ही सस्ते तरीके से भावुकता से चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। They're not entering into the process. वो प्रक्रिया में गुजर नहीं रहे हैं। Because it's not easy. क्योंकि वो आसान नहीं है। To go through process of purification and uproot all of these things, it's not some cheap, easy process. कि शुद्धिकरण से की प्रक्रिया से गुजरना और चीजों को जड़ से खत्म करना इतना आसान नहीं है। That's why most people don't want or deserve an actual bona fide guru. इसलिए ज्यादातर लोग चाहते नहीं या प्रमाणिक गुरु के लायक नहीं है। Because Prabhupada said you want to be cheated. प्रभुपाद कहते हैं आप ठगे जाना चाहते You're हैं। cheating and want to be cheated. आप ठग रहे हैं और ठगाना चाहते हैं। Therefore, there has to be cheating gurus. इसीलिए ठग गुरुओं की जरूरत है। So Krishna will just give you cheating guru. तो कृष्ण आपको ठग गुरु दे देंगे। If you really want to surrender and go through the process, अगर आप असल में शरणागत करना चाहते हैं और ये प्रक्रिया से गुजरना चाहते हैं, then Krishna will send you a very nice guru. तो फिर कृष्ण आपको एक बहुत ही अच्छा गुरु भेजेंगे। We get what we deserve. हमें वो मिलेगा जिसके हम लायक हैं। That's the truth. और ये सच्चाई है। So if we want to be flattered, we don't want our false ego disturbed, we just want to be sentimentally, encouraged, then you get the cheating guru. तो अगर हम चापलूसी में रहना चाहते हैं, कोई हमारी चापलूसी करे, हमारे मिथ्या अहंकार को बनाए रखे, तो हमें वैसे ठग गुरु मिलेंगे। Prabhupada is talking about hogs, dogs, camels, and asses. प्रभुपाद बात कर रहे हैं कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधों के बारे में। Did you miss that class? Hogs, dogs, camels, and asses? क्या आप उस कक्षा में नहीं थे जहाँ प्रभुपाद बात कर रहे हैं कुत्ते, गधे और ऊंट और सुअर? Were you there for that one? क्या आप उस क्लास में मौजूद थे? No. He missed the dogs, hogs, camels, and asses class. और कुत्ते, सुअर, गधे और ऊंट वाली कक्षा को आप मिस कर गए। And being glorified by the dogs, hogs, camels, and asses. और जो गुणगान करते हैं कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे, उनका ही गुणगान करते The हैं। mutual admiration society. आपसी तालमेल से एक दूसरे को सराहना कर रहे हैं। Oh, you're very nice. No, 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 no. You're very nice. No, 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 no. आप बहुत अच्छे हैं। नहीं, आप अच्छे हैं। Don't they say in India, like if they say no 4 times, it's like too much, It's like cheating you, जैसे कोई भारत में ऐसा होता है कि 4 बार आपको ना कह दे तो इसका मतलब वो ठग रहा है। Like if they come with the sweet rice and you say no, 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 like 4 times, that means you want it. कि जैसे कोई जो है खीर लेके आएगा और कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब असल में वो चाहता है। No, that means he wants it. I give it to him. बहुत ज़्यादा ना कर रहे हैं, इसका मतलब वो चाहता है खाना। If you just say no, thank you, no, thank you, और किसी को नहीं चाहिएगा तो कहेगा then नहीं। usually that means you don't go. मतलब सामान्यतः उसको नहीं चाहिए। No. नहीं, Give him the sweet. इसको खाना है। Give him the rasgulla. You want it. Be simple, man. You want it. Just say yes. कि सरल होइए, आप हाँ कहिए, Too आपको खाना many है। no's means yes. बहुत ज़्यादा ना कर रहा है, इसका मतलब उसको खाना है। This is an exacting science. सटीक विज्ञान है। Oh, Krishna. How did we get on this topic? हम इस विषय में कैसे This is पहुंच what गए? happens, ऐसा ही होता है मेरे साथ।
Aren't you glad you stopped taking notes? I don't want anyone to find out what we're saying here. नोट्स बनाना बंद कर दिया। मैं नहीं चाहता था किसी को पता चले हम क्या बातें कर रहे हैं। That's the real reason. यही असली कारण था कि मैंने आपको नोट्स बनाने से No one would believe this. कोई इस बात को विश्वास ही नहीं करेगा। I was trying to write down everything so save me from anxiety. Huh? I was trying to write down everything so save me from a lot of anxiety. Tell me. He was trying to write down everything to save him from anxiety. No, I was trying to write down Saved from anxiety. so you saved me. How to get free from anxiety? Is that what he said? No, I was trying You to. guys speak English? आप लोग अंग्रेजी बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? I'm deaf. I have an excuse. मैं तो चलो बह रहा हूँ, मेरे पास What's समस्या your है। excuse? लेकिन आप लोगों के पास क्या है? Right? You're supposed to be English. ये सॉरी अंग्रेज है। Yeah, I was trying to. He was trying to write everything so that you can save him from anxiety. No, so he saved me from So anxiety. he saved you from After telling anxiety. me. You guys are all messed up. सब लोग बुरे व्यस्त हो I गए। think this is my fault. मुझे लगता है मेरी गलती है। I think I did something wrong. मुझे लगता है मैंने कुछ गलती कर दी। I'm sorry. I am a little deaf. You मुझे know? क्षमा कीजिए, मैं थोड़े बह रहा हूँ। So how did you what kept you going and overcome all these challenges and tests? What keeps you going? Yeah. To overcome what? To overcome all the tests that you had. All the tests. Yeah. You need a good association. तो प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि किन चीजों ने आपको मदद किया a lot of good information, कि आपको इन परीक्षा से आप गुजरते रह सके। तो गुरु which ने is बताया practically helping you, even if it's difficult to hear it. You can see, yes, this is very good for me. This will help me. You have to have faith and hope that you're getting right information, right process. कि आप अगर सही संग करेंगे और आपको श्रद्धा मिलेगी, बुद्धि मिलेगी कि आप सही संग में सही चीजों को कर रहे हैं, सही चीज सुन रहे हैं। And your questions are being answered. It makes sense according to Guru Sadhu Shastra. और आपके प्रश्नों का आपको उत्तर मिल रहा है और उसका सही मतलब बन रहा है गुरु साधु शास्त्र के And the आधार doubts are going away. और आपके सारे संदेह नष्ट हो रहे हैं। You become more peaceful, more happy. आप ज्यादा शांत और संतुष्ट होते जा रहे हैं। Right? So all these nice, you can tell by the results of the hearing. तो आप श्रवण के प्रभाव से बता सकते हैं कि आप सही श्रवण कर So रहे हैं। we must practically realize some results. तो हमें व्यवहारिक अनुभव करके देखना होगा हमें क्या Then फल that मिल रहा gives है। you some hope और फिर उससे आपको आशा that मिलेगी you're in right place. कि आप सही संग में हैं। And then you get all of these nice results from hearing, and we can talk about that another day, about what are the effects of proper hearing from proper source. और श्रवण के सही संग में श्रवण करने से आपके अंदर क्या प्रभाव दिखते हैं, हम दूसरे दिन उन विषयों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। And sometimes we even laugh. और कई बार कभी-कभी में हंसते भी हैं। That's why I said it's allowed. इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पे अनुमति है हंसने की। Because otherwise, if the information is very heavy and we cannot laugh about it, we're going to die. क्योंकि जानकारी अगर इतनी भारी है और हम उस पे हंस नहीं पाएंगे तो हो सकता है हम या तो मर ही जाएंगे। Right? If I just keep talking about heavy lashes and cutting and chopping and smashing and frying and it's too much. अगर मैं केवल बात करते रहूं भारी मार के काट छाट करने की और तोड़ फोड़ करने की तो ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। There's too many action words there, you know. कुछ ज्यादा ही वहाँ पे क्रिया शब्द है। And it's all against us, right? So it's like there's too some- many action words which are coming at me, you और know. ये सारे जो है मेरे खिलाफ आ जाते हैं। Too many adjectives going on there, you know. बहुत सारे Chopping, frying, cutting, काटना, slicing, छाटना, तलना, sawing. But if we didn't have faith or hope, you cannot laugh. तो अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है या आशा नहीं है तो आप हंस नहीं पाएंगे, It's not possible. संभव नहीं है। So when you feel comfortable enough that you can actually laugh, that means you're feeling some shelter and protection. तो अगर आपको इतना आत्मविश्वास है कि आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, इसका मतलब आप कुछ आश्रय और रक्षण महसूस कर रहे हैं। And when you're out with like-minded persons who are like a family and friends, then you can just be yourself. तो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं आसपास जिनका मन आपके जैसा ही है तो आप अपने आप को व्यक्त
प्रस्तुत कर सकते हैं उनके सामने। So it's more natural. बहुत स्वाभाविक रूप से अपने आप को रख पाएंगे उनके बीच। Otherwise, everyone's posing, everyone's cutting a profile. वरना सब लोग वहाँ जैसे आप सब में नाटक कर रहे हैं, सब अपना अपना कुछ चीजें दिखाने का प्रयास You कर gotta रहे buy some white shoes or some silk chadar or some wooden, some. हैं। आपको कुछ सफेद चादर खरीदना पड़ेगा उनके सामने, सफेद जूते या लकड़ी के चप्पल खड़ाऊ खरीदने पड़ेंगे ताकि आप घोड़े की तरह चलें। It's a lot of competition going on. तो बहुत सारा प्रतियोगिता हो रहा है। It's like ladies, they're like, what kind of purse does she have? What kind of shoes does she have? Right? It's not a competition, you know what I mean? क्योंकि भी तो प्रतियोगिता होती है, उनके कैसा पर्स है, उनके कैसे जूते हैं। So let's go to the Sunday feast and we'll all like weigh and measure each other, externally, materially. संडे फीस्ट में जाएंगे, सबको देखेंगे बाहर से कौन कैसा है भौतिक तरीके से। Oh, she's wearing that sari again? और फिर से वही साड़ी पहन के आएंगे। Is that all she has? उनके पास एक ही साड़ी है। Wow, that's really deep. वाह, क्या गहरी बातें करते हैं। Really deep. That's not even on the body platform. It's on the outside of it. शरीर तक भी नहीं पहुंचे, शरीर के बाहर ही है। Like so superficial, इतना बनावटी बातें हो रही हैं। How long have you been a devotee? आप कितने दिनों से बात कर रहे हैं? Who's your guru? आपका गुरु कौन है? Who's your guru? It's like going up to someone and saying, who's your mama, जैसे Like, who are you, Who's your mama? आपकी माँ कौन है? जैसे बातें होती हैं। It's like, do we know each other? I'm sorry, did we meet before? हम पूछेंगे क्या हम पहले कभी मिले हैं? हम एक दूसरे को जानते Sorry, हैं। please introduce yourself again. आप पहले अपने बारे में बताइए, आपको है कौन? It's the Sunday love feast. ये है संडे लव। It's all going on in the Sunday love. ये सब संडे लव फीस्ट में होता है। Just love everybody. सभी से प्रेम कीजिए। I'm a devotee. I love people. मैं एक भक्त हूँ, लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। Don't you love everybody? क्या आप सभी से प्रेम करते हैं? It says if you don't love Krishna, you can't love even yourself. What to speak of anybody else? कहते हैं अगर आप कृष्ण से प्रेम नहीं करते तो आप खुद से भी प्रेम नहीं कर सकते, तो किसी और से क्या प्रेम करेंगे? I get in trouble. Please excuse me. मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। Sometimes these things come to me and I don't know why. कभी-कभी ये चीजें मेरे अंदर आने लगती है, मुझे पता नहीं क्यों। But they said if I keep preaching, it will go away. अगर आप प्रचार करते रहेंगे तो ये चीजें धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी आपकी। It's not going away though. लेकिन ये चीजें जा ही नहीं रही। Oh, Krishna. So this is a very interesting first class for you. बहुत ही Thank God you विशेष didn't take any notes. धन्यवाद कि आपने कोई नोट्स नहीं बनाया। No one would believe you anyway. और कोई भी आपकी बात वैसे ही मानेगा नहीं। Like this cannot be going on like this. ये सब बातें नहीं होती। How is that Guru Sadhu Shastra? कैसे ये गुरु साधु शास्त्र है? The whole thing is Guru Sadhu Shastra. सब कुछ गुरु साधु शास्त्र ही है। But can you understand? It's another question. लेकिन क्या आप समझ पा रहे हैं? ये और एक प्रश्न। So what's your question, my friend? तो आपका क्या प्रश्न है मेरे लिए? Yeah, you must have a good question for us. अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न होगा हमारे लिए। Don't you feel at home here? क्या आपको ऐसा नहीं लगता आप घर में हैं? Like-minded people, एक जैसे मानसिकता वाले लोग birds हैं, of the same feather. एक पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। We're all birds of the same feather, हम right? सब एक पंख वाले पक्षी हैं। Check your feathers. अपने पंख देख लीजिए। I guess so, all right. ठीक है, देखने में लग रहा है। A bird's a bird, you know. पक्षी लोग पक्षी हो गए। Hare Krishna.
Yes, Gurudev, I would like to extend our conversation from last day. You want to what? Extend our conversation from last day. He wants to pick up where we left off last day. Okay. Yeah. So, Gurudev, You want to fight? You want to get some boxing gloves on? तो कह रहे हैं हमने जहाँ पिछली बार जहाँ बात खत्म की थी मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा We'll do some MMA, you know. मुझे बता रहे हैं अपना बॉक्सिंग के ग्लव्स लेके आने वाले हैं क्या I'm associated with Maharaj, you know. महाराज से थोड़ा संग करने जाना है Velcro, you know. Velcro. I'm ready now. अब मैं तैयार हूँ Submissive all reception. ये होता है बिनी हाउस स्टॉप I'm going to wrestle that Maharaj down on the ground. महाराज को पहलवानी करके मैं गिराऊंगा पहले No, probably not. ऐसा नहीं है ना so Gurudev, I agree. What's wrong with you? गुरुदेव क्या गड़बड़ है आपके साथ You made a mistake there. I don't want you to feel pressure, you know what I mean? आपने कुछ गलती कर दी है How that came out of your mouth. ये आपके मुंह से बाहर कैसे आया Anyway, that's a different point. तो वो एक अलग बात है Gurudev, I appreciate your way of teaching. First of all, I am not against your way of teaching. But I felt the butt coming, you know what I mean? He's doing Indian politics on you, you know what I mean? वो कह रहे गुरुदेव मुझे आपका प्रचार अच्छा लगता है लेकिन कह रहे लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर बम फेंकने Speak वाले some sweet words, give him a massage, you know. पहले कुछ मीठी बातें करो थोड़ा मसाज करो But लेकिन उसके बाद I'm always waiting for the but. मैं हमेशा इस लेकिन के इंतजार में रहता हूँ No buts? I appreciate and accept that our bad habits needs to be go away, and that's why you emphasize so much on lashes and everything. And No, it's better to do Shravanam Kirtanam, but just in case you don't like that, then I don't want to say it because I don't want to get fact checked. तो कह रहे हैं कि हमें अपनी बुरी आदतों से बचने की जरूरत है और ये हमें मदद करते हैं भारी मान तो गुरुदेव बता रहे हैं कि अगर बेहतर होगा हम श्रवण और कीर्तन करके सीखें लेकिन अगर हम नहीं सुन रहे हैं तो हमें भारी मान की जरूरत So better hearing and chanting, तो बेहतर होगा श्रवण और कीर्तन करके and just in case that's not working, और अगर किसी तरह से वो काम नहीं कर रहा actually, I accept what you just said because that is what I was about to say because of, from my personal experience, I feel that removing bad habits is a very difficult task, and you have to think about all the bad things that you have, and it will manifest itself. That it will keep happening because you are manifesting bad things. But I feel like there's a lot of bad things. I feel like when there is some positive things and negative things, and we are focusing on positive things, and we have 24 hours. And out of those 24 hours, how much time we are giving to those positive things? And obviously, indirectly, we are removing the negative things. We are not even going to focus on those things because our time is limited. And that limited time is focused on positive things. And there is no need to worry about those negative things because after some time, because positive things are so much attractive, we are already attracted to those positive things because we are seeing positive results in ourselves by applying them into our life. And slowly those negative things will automatically go away. He's like Arjuna, he's skillfully avoiding the fight, you know. तो वो कह रहे हैं कि अगर हम सकारात्मक चीजों के बारे में सोचें उनके बारे में बात करेंगे तो नकारात्मक चीजें अपने आप जो है चली जाएंगी हमको उनके बारे में चिंता सोचने की जरूरत नहीं है तो गुरुदेव बता रहे हैं ये अर्जुन के जैसे हैं जो कुशलता से लड़ाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं It's all positive, right? Love, crying to Krishna. कृष्ण के लिए रोना Focus on the positive. कि सकारात्मक चीजों के बारे में चलिए बात करते हैं Is that what you do? क्या आप ये करते हैं Are you able to always just be attracted and think about Krishna and not desire anything else? क्या आप हमेशा कृष्ण के प्रति आकर्षित आसक्त हो पा रहे Are हैं you able to do that? और कोई अन्य इच्छा नहीं रख पा रही आपके अंदर क्या आप ये कर पा रहे हैं Gurudev, I came into Krishna consciousness because
I was so much happy with my life, first of all, because You even were? though materialistically, but I was like getting on to best college and always top in education. Acha. Yeah. Oh, best college, top in education. Yeah, that means you're a smart guy. Yeah. Oh. He's being honest. Honest is a good quality. तो ये ईमानदारी से कह रहे हैं, ईमानदारी बहुत अच्छा गुण है। ये सब पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहे, इनको सबसे टॉप कॉलेज मिला। That's a Brahminical quality. तो ये तो ब्राह्मण जैसे गुण है, Honesty अच्छा is a है। Brahminical quality. तो ईमानदारी जो है ब्राह्मण का गुण है। So Gurudev, because it was not fulfilling. And So what? Because it was not fulfilling to me. Yeah. Because I was bored after doing something and doing it again. I was getting bored, and that's why I came into spirituality. And then when I Are you bored in my classes? क्या आप मेरे क्लासेस में भी बोर हो गए? प्रभु पूछ sometime with some last lashes. He needs asking for lashes? Every lashes? कभी-कभी जब आप भारी मार की बात करते हैं तो कह रहे Are you हैं becoming convinced that that could be a good thing? क्या आप आश्वस्त हो रहे हैं कि भारी मार जो अच्छी चीज है That there's some positive use of that? कि उसका कुछ सकारात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है? Gurudev, basically, this is how I live. In the temple, I'm always happy with everyone. When I walk, I'm very positive. I want to say pay obeisance to everyone I see. I want to be. There's a lot of eyes there, you know? वो कह रहे हैं कि मैं जब भी मंदिर आता हूँ मैं बहुत सुखी होता हूँ, right? मैं जब जिससे भी मिलता हूँ तो दंडवत करना चाहता हूँ, तो कह रहे हैं आप बहुत मैं बहुत कर रहे हैं, मैं ये करना In चाहता हूँ। English, Me. How about me? because कैसा होगा अगर- in English, I is written in capital, I. and there is so much ego associated with I, and because this is how English is created, and when we have to express in English, I have to use English. You are so simple, man. कह रहे हैं जब You're the अंग्रेजी में simplest guy I ever met in my life. तो कह रहे हैं आप इतने सरल व्यक्ति हैं, पूरी जिंदगी में मैं आपसे सरल व्यक्ति से नहीं Where did मिला you हूँ। get all this simplicity from? इतनी सरलता आपने कहाँ से जमा की है जीवन में? I'm just a little joking. मैं थोड़ा आपके साथ मजाक कर रहा हूँ, Don't mind. बुरा मत मानिएगा। Yes, Gurudev. So this was my question. Like we are focusing on positive things, then negative will go away. So what do you Then my question, like I said other night, why is Krishna explaining about prison house of material world, threefold miseries, inflicting heavy lashes by Maya? Why is Krishna and all of Krishna's devotees in Bhagavatam and the Goswamis, why are they all discussing these topics if it's not meant to be discussed? तो प्रभु कह रहे हैं कि हमें सकारात्मक चीजों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो गुरुदेव बता रहे हैं अगर कृष्णा हमेशा बातें कर रहे हैं, इस जगत को कारागार बनाया गया है, यहाँ पे 3 तरह के कष्ट मिलते हैं और माया हमें इस तरह से हमें हमेशा प्रताड़ित करती रहती है, और भागवतम कृष्णा के भक्त आके हमेशा इसी चीजों के बारे में विवरण दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, तो क्यों कृष्णा ऐसा कर रहे हैं? Why is Krishna saying if you surrender to me you can get free from the suffering, heavy lashes of Maya? Why is Krishna saying like that? और कृष्णा क्यों कह रहे हैं अगर आप मुझे शरणागत करेंगे तो आप भारी मार से, माया के दुखों से, माया के कष्टों से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा कृष्ण क्यों कह If we don't realize the heavy lashes of Maya and that threefold miseries, then why will we think to surrender to Krishna? तो अगर हम माया के मार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, जो इस तरह का हमें कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो क्यों हम सोचेंगे हमें कृष्ण को शरणागत करना है? based on So if you have tamagun, you have pride, you have arrogance, you have conceit, nature, all of these demoniac qualities, then you cannot perceive the reality of the condition. तो अगर आपके अंदर तमोगुण है, दंभ है, दर्प है और इस तरह के सारे असुरों जैसे गुण हैं, तो आप अपने इस कष्टमय दुखमय स्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। Because the pride makes us very how do you say, blind. क्योंकि दंभ हमें असल में अंधा बना देता है। So we don't have a good, this pride and false ego not allowing us to understand the reality of who we are and what is our condition or position. तो ये दंभ और मिथ्या अहंकार हमें ये सोचने नहीं दे रहा हमारी स्थिति कितनी बुरी है।
So Srila Govinda-Swami would say, you're just spiritually deaf, dumb, blind. तो श्रील गौरव महाराज कहते थे कि आप आध्यात्मिक रूप से अंधे, गूंगे और बहरे हैं. So first you must realize, how is it true? तो पहले आपको ये जानना होगा कि बात सत्य कैसे है. Because we don't think ourselves deaf, dumb and blind. क्योंकि हम खुद को अंधे, गूंगे, बहरे नहीं समझते. We cannot perceive that. और हम इसको अनुभव नहीं कर पाते. We think we can see, I'm seeing, I'm using my eyeballs, I'm seeing. कि हम देख सकते हैं, मैं अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ. Listen to what are you saying? How you say I'm deaf? और मैं सुन पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं. आप कैसे कह रहे हैं कि मैं बहरा हूँ. I'm smart. मैं बुद्धिमान हूँ. I went to the best school. मैं सबसे श्रेष्ठ स्कूल में I गया. had top in my class. मैं अपने क्लास में टॉप रहता था. Right, so this is pride. तो ये एक दंभ है. Right, and this problem with education, it makes you puffed up. और ये शिक्षण व्यवस्था की कमी है कि वो आपको अहंकार रस बना देता है, अहंकारी बना देता है. That we think we're great, we think we're so smart, so capable. और हम सोचते हैं हम महान हैं, हम बहुत ज़्यादा योग्यता है हमारे अंदर. So that pride, arrogance, conceited nature, it makes you spiritually deaf, dumb and blind. तो ये दंभ, ये अकड़ और ये दर्प, इस तरह के गुण आपको आध्यात्मिक रूप से अंधे, गूंगे, बहरे बनाते हैं. So do we realize that we're spiritually deaf, dumb and blind? तो क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से अंधे, गूंगे या बहरे हैं? Do we have that type of spiritual intelligence? क्या हमारे पास ऐसी आध्यात्मिक बुद्धि है? That's another question. ये एक और प्रश्न है. So why should we assume if we're maintaining demoniac qualities under modes of material nature, that means we have complete faulty, consciousness and faulty misunderstanding? इस तरह हम असुरों के गुण प्रकट कर रहे हैं पूरी तरह से तमोगुण में, तो इसका मतलब हम बहुत ही बुरी चेतना में हैं और हमारे खराब चेतना में हैं. First of all, about my education, I want to say I'm a college dropout. I dropped out from college, so It doesn't what? You dropped out of college. Really? Yeah. Why are you being so negative, man? Let's focus on the positive. Yeah, that's why I didn't. The last thing I know, you're top of the school and the top of the class, man. Why dwell on the negative? तो पहले आप बता रहे थे कि हमें सकारात्मक चीजों के बारे में बात करनी चाहिए. अभी बता रहे हैं मैंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया था. अभी आप नकारात्मक बातें क्यों शुरू कर दिया? अभी आप सकारात्मक बातें कीजिए. पहले आप बता रहे थे मैं क्लास में टॉप रहता था. Keep up that self-esteem, तो अपने आत्म प्रतिष्ठा को बनाए रखिए. Don't go down that easy. इतने आसानी से गिरिए मत अपनी प्रतिष्ठा से. So, for the question you asked, Gurudev, I want to say that because in this material world, we are so much prone to being deceived by even our family members, even from our nearby friends. We have so many such incidents that are so much painful that first of all, we don't accept that God exists, So, Adi Bodhika means suffering because of material association. तो प्रभु कह रहे हैं कि कई बार हमें अपने मित्रों, परिवार के संग में उनके व्यवहार से कई बार हमें बहुत बुरा लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता. तो गुरुदेव बता रहे हैं कि हमें दुख जो कष्ट मिलता है अन्य जीवात्माओं से, इसे कहते हैं आदि भौतिक. So that's a material suffering. तो ये इस तरह के भौतिक कष्ट है. Right. So we don't equate the purification process or tapodivyam. Don't equate that divine austerity with so-called suffering under the modes of material nature with other, conditioned souls. तो दिव्य तपस्या की तुलना, तपोदिव्य जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसकी तुलना आप जो बद्ध जीवात्माओं के साथ व्यवहार करने के समय जो आपको कष्ट या दुख मिलता था, वो दोनों एक समान नहीं है. Because that material adibodhika means suffering beginning, middle and the end. क्योंकि वो भौतिक आदि भौतिक जो है वो उसमें आपको शुरू, मध्य, अंत में तीनों समय आपको दुख मिलेगा. Because there's nothing positive. तो वहाँ कुछ भी सकारात्मक नहीं है, उस कष्ट में कुछ भी सकारात्मक चीज बाहर नहीं आएगी. But when we hear unpalatable truth, it may be a little disturbing, but that's a type of divine austerity which will purify the false ego and put us more into spiritual consciousness. लेकिन जब आप कड़वा सत्य सुनेंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा वो बुरा लग सकता है, लेकिन वो धीरे-धीरे आपको शुद्ध करेगा और आपको सही चेतना में लेकर आएगा. And then you become more and more purified, more and more peaceful, more and more happy. और तब और ज़्यादा शुद्ध होते जाएंगे, और ज़्यादा सुखी होते जाएंगे, और ज़्यादा संतुष्ट होते जाएंगे, शांत होते जाएंगे. So it's a different, heaven and hell difference, right? तो स्वर्ग और नरक का अंतर है.
So don't equate the suffering of ordinary living entities with association with Krishna, Krishna's devotees. तो सामान्य बद्ध जीवात्माओं के साथ संग करने में जो आपको दुख कष्ट मिला, उसकी तुलना आप कृष्ण के भक्तों के साथ संग करने की तुलना मत कीजिए. And it says even the chastisement or even the punishment of sadhu, guru, Vaishnava, that's a tremendous blessing. और यहाँ तक का साधु गुरु वैष्णव का दंड यह भी एक सब बहुत बड़ा आशीर्वाद है. Because who will take a risk to approach us in our false ego? क्योंकि कौन खतरा उठाएगा हमारे मिथ्या अहंकार को छूने का? Nobody will. कोई भी नहीं उठाएगा. As soon as someone has big false ego, it's like better leave that person alone, right? अगर किसी का अहंकार बहुत बड़ा है तो हम सोचेंगे बेहतर होगा उसको अकेले छोड़ दो. Even Krishna says, like, don't disturb them. यहाँ तक कृष्ण ने भी कहा है उनको परेशान मत कीजिए. Because nothing positive really can come out of that. क्योंकि कुछ भी सकारात्मक चीजें उनके साथ नहीं आएंगी बाहर. But it says that sometimes the representative of Krishna, the guru, he takes a risk. लेकिन कभी-कभी ऐसा कहते हैं कि कृष्णा के प्रतिनिधि गुरु एक खतरा उठाते हैं. Even though Krishna is saying don't disturb them. यहाँ तक कि कृष्ण ने कहा है उनको परेशान मत कीजिए. Because to speak the truth in the world of untruth, those persons are the most hated people in the world. क्योंकि अगर आप सत्य कहेंगे असत्य के जगत में तो उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत की जाती है इस जगत में. And to approach a person with the big false ego, with the demoniac qualities, is very risky. और किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना जिसका मिथ्या अहंकार बहुत बड़ा है, असुर जैसे गुण है, बहुत खतरनाक है. Because the pride will not allow them to understand properly. क्योंकि दंभ में वो चीजों को सही तरीके से समझ नहीं पाते. So they can very easily misunderstand, take it in the wrong way. तो वो बहुत ही आसानी से गलत समझ बैठते हैं या गलत तरीके से ले लेते हैं. Even though you're trying to help them. हो सकता है आप उनकी मदद करने का भी प्रयास कर रहे हो. So it's risky. तो ये बहुत खतरनाक है. And a lot of times they just totally misunderstand. और कई बार वो पूरी तरह से गलत समझ बैठते हैं. And even they'll start to blame you. और फिर वो आपके ऊपर दोष भी डालना शुरू करते हैं. And all you're thinking is, okay, how do I help them? और आप केवल सोच रहे हैं purify them, कैसे मैं इनकी मदद करूं, कैसे मैं इनको शुद्ध करूं, so that they can, advance in their spiritual life. ताकि वो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें. So if you're the type of guru that just flattering everybody, there's plenty of those gurus. अगर आप ऐसा गुरु चाहते हैं जो आपकी केवल चापलूसी करे तो बहुत सारे ऐसे गुरु उपलब्ध हैं. Because they know how risky it is and how hard work that is. क्योंकि उनको पता है ये कितना खतरनाक है और कितना कठिन परिश्रम है. And how many people will misunderstand, take it in the wrong way. और कैसे ज्यादातर लोग उसको गलत समझते हैं या गलत तरीके से लेते हैं. Blame you and criticize you. फिर आपके ऊपर दोष डालते हैं, And go against you. आपके खिलाफ जाते हैं. So much headache for you. और बहुत सारा सरदर्द देते हैं आपको. So it's a thankless task. तो बिना किसी धन्यवाद के कार्य करते रहना होता है. And then if we do something good and right, we want to take all the credit. और अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, सही करते हैं, तो हम सारा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं. And if something goes wrong, it's the guru's fault. और जब भी कुछ गलती होती है तो ये गुरु की गलती थी. So that's a thankless task. तो ये किसी बिना धन्यवाद के गुरु को कार्य करना होता है. My Gurudev said, he trained me in a certain way, and he said, you should do the same thing. तो मेरे गुरुदेव ने एक विशेष तरीके से मुझे प्रशिक्षण दिया और कहा कि आप भी वही करने का प्रयास करो. Some of my godbrothers, they were criticizing, Maharaj is, he's too heavy, he's too direct. तो कुछ मेरे गुरु भाई मेरी बुराई करते हैं कि वो ज्यादा भारी हैं, ज्यादा सीधी बात करते हैं. Some criticism coming, it's offensive, how he's preaching to different devotees. तो वो मेरे बारे में इस तरह बुरी बातें करते हैं कि कैसे वो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं इस तरह. Especially senior devotees. विशेष करके वरिष्ठ भक्तों के प्रति. So they had a lot of criticism against me. तो मेरे बारे में बहुत सारी बुराइयां करते हैं. And we went to see Srila Govinda-Swami about it. और जब हम श्रील गौर गोविंद साहब महाराज से मिलने के लिए गए इस बात से. And then we were going on Padayatra to meet Gurudev. और हम पदयात्रा में गुरुदेव से मिलने जा रहे थे. And we all riding in the same taxi. और हम सभी एक ही टैक्सी में बैठे थे. And I know a couple of these devotees are going to complain to Gurudev against me. और मुझे पता था कि कुछ इसमें से भक्त हैं जो मेरे बारे में गुरुदेव से शिकायत करने वाले हैं. So I was a little nervous. तो मैं थोड़ा सहमा हुआ था. I think maybe I'm making some mistake or something. कि मैं सोच रहा था हो सकता है शायद मैं कुछ गलती करता हूँ. So I don't want to offend anybody. मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता था. So I also need to know. तो मुझे भी जानने की जरूरत थी. So with that in mind, we went to meet Maharaj. तो इसे मन में रखते हुए हम महाराज से मिलने के लिए गए. And then when we got out of the taxi, we were walking towards the veranda. और जब हम टैक्सी से बाहर निकल के हम आंगन की तरफ बढ़ने लगे. There was 3 of us. तो हम 3 लोग थे वहाँ. And then Maharaj stood up and he said, Murali Krsna. And I was like, महाराज खड़े हुए
उन्होंने कहा मुरली कृष्णा, और मैं सुन के थोड़ा चौंक गया। Gurudev never did that before. गुरुदेव ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। So I couldn't believe it. तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाया। The Maharaj was like so happy to see me, you know. महाराज इतने खुश थे केवल मुझे देखकर। I was like so relieved, you know. मुझे इतनी राहत I'm thinking I did something wrong, I'm gonna get chastised, you know. मैंने सोचा मैंने कुछ गलती की है, मुझे थोड़ी डांट पड़ेगी। And the Maharaj is like welcoming me there. और महाराज मेरा स्वागत कर रहे थे वहाँ। And then the devotees started, you know, putting, you know, argument against me in front of Gurudev. और भक्त जो है मेरे बारे में कुछ बहस करना चाहते थे गुरुदेव के साथ। So I also wanted to see how Gurudev will say. तो मैं भी देखना चाहता था गुरुदेव उसके बारे में क्या कहेंगे। And I'm not sure. I might have said, you know, some devotees are upset and they're saying I'm preaching like this and I'm making this offense, and you know, so I'm a little need a clarification. तो मुझे भी थोड़ा पुष्टिकरण चाहिए था। भक्त मेरे बारे में बात करते थे कि मैं कुछ भक्तों के प्रति अपराध करता हूँ, मैं इस तरीके से प्रचार करता हूँ जो प्रचार करना सही नहीं है, कुछ ज़्यादा ही सीधी बातें करता हूँ। तो मुझे लगा इस तरह से मैं भी थोड़ा जानना चाहता था। Like maybe I'm doing something wrong. They're saying I'm being preaching too strong. I'm offending people. कि मैं जानना चाहता था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही सख्ती से प्रचार कर रहा हूँ। So Gurudev turns around and says, he said, you go on preaching boldly and fearlessly. तो गुरुदेव मेरी तरफ मुड़े। Do not hesitate. गुरुदेव मेरी तरफ मुड़े, उन्होंने कहा इसी तरह से पूरी हिम्मत से बिना किसी हिचक के प्रचार करना जारी रखो। He like totally encouraged me in front of those devotees also. और उन भक्तों के सामने ही उन्होंने मुझे पूरी तरह से प्रोत्साहन दिया। Boldly, fearlessly, do not hesitate. Speak the truth, no compromise like this. पूरी हिम्मत से बिना किसी भय के, बिना किसी हिचक के, बिना कोई समझौता किए प्रचार इसी तरह करते रहो। Because you're trying to help these people. क्योंकि तुम इन लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हो। And he understands it perfectly well. और उसको पूरी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। So, but I needed that confirmation because I'm depending on my Guru. I'm depending on Guru Krishna. This is what he's giving me. I just want to be sure that I'm hearing correctly and understanding correctly. I don't want to make a mistake. I don't want to offend anybody. क्योंकि मैं पुष्टिकरण करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करना चाहता था, और मैं जानना चाहता था कि गुरु ऐसा चाहते हैं। So he 100% encouraged me. तो उन्होंने पूरे 100% से मुझे प्रोत्साहन दिया। And inside I was like, yeah, you know. और भीतर से मैं कह रहा था हाँ। But the main point was that you have to do that, otherwise how can you help them? लेकिन सबसे मुख्य बात ये है आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना कैसे आप उनकी मदद कर पाएंगे। So he understood that this is what's required to actually help them. क्योंकि वो समझ पाए थे ये असल जरूरत है उनकी मदद करने की। And he confirmed and understood that I'm sincerely trying to help them. और उन्होंने उस बात की पुष्टि की और उन्हें समझाया कि हाँ मैं असल में उनकी मदद करने का प्रयास And that's what Guru Krishna is giving me. और यही गुरु कृष्ण मुझे दे That's रहे how हैं। they're telling me to speak. और इसी तरह से वो मुझे बोलने के लिए भी कह रहे And that's why I say, you know, you don't have to come and listen to me. हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ आपको यहाँ मुझे सुनने की जरूरत नहीं है आकर। And you know, I'm not telling my god brothers to preach like how I'm preaching. और मैंने अपने गुरु भाइयों को भी ऐसा नहीं कहा कि जिस तरह मैं प्रचार करता हूँ आप भी वैसा प्रचार I'm just following my instruction. मैं अपने निर्देशों का पालन कर रहा So whatever Gurudev instructed you, then you just follow that. तो That's गुरुदेव perfect. ने जो आपको निर्देश दिया आप उसका पालन कीजिए। Don't tell me to do what you're doing. मुझे ये करने को मत कहिए जो आप कर रहे हैं। Right? Don't find fault, criticize me because I'm following Gurudev's instruction. So मेरे you साथ- mind your business, I'll mind my business. मेरे साथ दोस्त निकाल के मेरी बुराई मत कीजिए क्योंकि मैं गुरुदेव के निर्देश का पालन करने का प्रयास करूँ। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। I'm not asking you to do what I'm doing. मैं आपको नहीं कह रहा कि आप आके वो कीजिए जो मैं भी कर रहा हूँ। Gurudev didn't ask you to do what I'm और doing. नहीं गुरुदेव ने आपको ऐसा करने को कहा जो मैंने So आपको। please don't tell me, you know, what I'm supposed to do तो मुझे ये बताने का प्रयास मत कीजिए कि मुझे क्या करना according to चाहिए। your, you know, calculation, आपके गणना के अनुसार speculation. मनोधर्म। Does that help? क्या आपकी मदद हुई? In beginning, Prabhupada says, he quotes this verse about in Bengali. There's one Bengali verse that whenever you meet some nice, you know, some people, new people, you should speak some sweet words to them. तो बंगाली में कहावत प्रभुपाद बताते हैं जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो उनसे कुछ मीठी बातें करनी चाहिए। Does anyone who speaks Bengali know that verse? क्या कोई यहाँ बंगाली है जो उस श्लोक को जानते हैं? It's like some proverb, you know. कोई When you कहावत है meet somebody, you know, speak something sweet to them.
जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो उनसे कुछ मीठी बातें करनी चाहिए। Sanatan's from Nepal. सनातन नेपाल से हैं, He's not even Indian. वो तो भारतीय ही नहीं। You see how quick I offend everybody? देख कितनी जल्दी मैं लोगों के प्रति अपराध करते It's हैं, really bad. you कितना know. बुरा है। That's why I said I gotta go to Gurudev and find out I'm doing the right thing. इसलिए मैं कहता हूँ मुझे गुरुदेव के पास जाने की जरूरत This पड़ती है stuff's पता लगाने के coming लिए out way too easy. You know what I कि मैं mean? सही कर रहा हूँ या I नहीं, better क्योंकि double check this one. you know. बहुत आसानी से मेरे भीतर से बात बाहर आती है, I तो मैं could be इसको बार-बार like चेक blowing करना चाहता हूँ। everybody away. You know? I could be on my way to hell. हो सकता है मैं नरक के रास्ते All में my लेके जाऊँ, offenses I'm committing against इतने सारे everybody. अपराध करने के बाद। Then I was like, okay. फिर जब गुरुदेव पुष्टि करके कहते हैं चलो ठीक है। But Prabhupada, he's explaining that this speaking sweet words when you meet somebody, this is in the social, material sense of the word. तो बताते हैं इस तरह की मीठी बातें करना भौतिक और भौतिक सामाजिक स्तर पे किया जाता है, It's like a social etiquette. ये सामाजिक सदाचार है। But Prabhupada said, but that doesn't apply in spiritual circles. लेकिन वो बताते हैं आध्यात्मिक परिवेश में ये लागू नहीं होता, Because in spiritual circles, you have to speak the truth. क्योंकि आध्यात्मिक परिवेश में आपको सत्य बोलना होता है, According to Guru, Sadhu, and Shastra. गुरु साधु शास्त्र के आधार पर। And you're speaking, establishing the truth in the world of untruth. और आप सत्य को स्थापित करने का प्रयास करें असत्य के जगत में, So that truth to conditioned souls will be very unpalatable. तो ये सत्य बद्ध जीवों को बहुत ही कड़वा लगता It's है, not going to be tasty. उनको स्वादिष्ट नहीं It's लगता, unpalatable. बहुत ही कड़वा लगता है। It's just like, Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami talks about the jaundice condition. जैसे रूप गोस्वामी बात करते हैं पीलिया अवस्था की, It's supposed to be very sweet, कि कुछ बहुत ही मीठा होना चाहिए, but when you're in disease condition, it tastes bitter. लेकिन जब आप बीमार अवस्था में होते हैं तो आपको So कड़वा लगता है। sometimes the unpalatable truth, it feels like a bitter medicine. तो कभी-कभी कड़वा सत्य एक कड़वी दवा के जैसा लगता है, In beginning. विशेष करके शुरुआत में। Then after you go through the purification, whatever the topic is, it's just like a pure nectar. It's like a food for your soul. और शुद्धिकरण के बाद जो भी विषय में बात हो, आपको शुद्ध अमृत मिलेगा, जैसे आत्मा को भोजन मिल रहा हो। That was my experience. ये मेरा अनुभव था। Beginning is unpalatable, it's sometimes disturbing. शुरुआत में थोड़ा कड़वा लगता था, कई बार बहुत परेशानी होती थी। Sitting in a frying pan, cooking a little bit. ऐसा लगता था कि जलते तवे में बैठ के पक रहे That's हैं, uncomfortable. बहुत ही असुविधाजनक And स्थिति then होती है। Gurudev is challenging you, he's confronting you. गुरुदेव आपको चुनौती दे रहे हैं। I remember one time one Prabhupada disciple, some Prabhupada disciples came. मुझे याद है कुछ प्रभुपाद के Some शिष्य of them were criticizing Gurudev. और उनमें से कुछ जो है गुरुदेव के प्रति दोष निकाल रहे थे, So I was like not happy. तो मैं उसे सुखी नहीं था, I was like a dog, I was like, जैसे मैं एक कुत्ते के जैसा, and I was like growling, और जैसे inside. कुत्ता जो है आवाज निकालता है इस तरह से, Dogs do like that. जब कुत्ते कई बार ऐसे गुस्से में आवाज निकालते So हैं, I was kind of looking at them because they're a little offensive to my guru. और मैं उनके तरफ इस तरह से देख रहा था क्योंकि वो मेरे गुरु के प्रति कुछ अपराध But कर रहे because they came there, थे, क्योंकि वो वहाँ आए थे, then okay, at least they're trying to hear from me. कि कम से कम वो महाराज से सुनने का प्रयास करना So I चाहते kind of had like a negative attitude. हैं। तो मेरा जो है रवैया थोड़ा So it's नकारात्मक kind of like, right? And then all of a sudden I look and Gurudev's looking right at me. और जब मैं इस तरह से गुस्से में था, गुरुदेव, मैंने देखा गुरुदेव मुझे ही देख रहे थे, And I look and Gurudev's looking. और मैंने देखा गुरुदेव मुझे देख के इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। And he caught me. गुरुदेव ने मुझे पकड़ Like लिया, he caught me. And he's looking at me and he was like not happy with me. गुरुदेव ने मुझे पकड़ लिया, देख के कहा कि मुझे समझ में आ गया He गुरुदेव मुझे didn't सुखी नहीं, like that I was in that mood. क्योंकि उनको पसंद नहीं आया कि मैं उस भाव में हूँ। So when he looked at me, I understood this is not pleasing Gurudev. You better change your attitude like really fast. तो जब गुरुदेव ने मेरी तरफ इस तरह से देखा तो मैं समझ गया गुरुदेव मुझसे सुखी नहीं है और मुझे अपना रवैया बहुत जल्द बदलने की जरूरत है। So he helped me. तो वो मेरी मदद कर रहे थे। So it doesn't always have to feel good. तो कोई जरूरी नहीं आपको हमेशा अच्छा But if लगेगा, it's true and correct and it's protecting me, then better I hear the truth. लेकिन अगर वो सत्य है, मेरा रक्षण कर रहा है, तो अवश्य मुझे सत्य सुनना चाहिए That saved me. और वो मुझे बचाएगा। So after some time, then to me, it didn't matter whatever Gurudev wanted to talk about, it was all nectar for me. Whether I understood it or not. और कुछ समय के बाद गुरुदेव जो भी प्रचार करते थे वो मेरे लिए अमृत बन गया, हो सकता है मैं उसको समझ पाऊँ या समझ ना पाऊँ, It didn't matter. कोई Whatever फर्क he नहीं wants to पड़ता। talk about,
whatever makes him happy, जो भी चीजों पे बात करना चाहते हैं, जो भी उसको उनको आनंद देता है, whatever philosophical point he wants to talk about, जो भी सैद्धांतिक बातें वो it करना was all चाहते हैं, nectar, सब अमृत लगता था, food for my soul. मेरी आत्मा को भोजन लगता था। But in the beginning, it didn't always feel like that. लेकिन शुरुआत में हमेशा ऐसा नहीं लगता था। You see, so my point is that you're thinking that I'm like not presenting it properly. तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी बात ये है कि मैं सही तरीके से प्रचार नहीं कर रहा हूँ। So you're not liking my approach or my presentation. तो आपको मेरा रवैया या मेरी प्रस्तुति आपको पसंद नहीं आ रही। So you're critiquing me. तो आप मेरी गलती निकाल रहे हैं। Right? And then you have your judgment about whether I'm doing right or wrong. और आप एक फैसला कह रहे हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या सही नहीं कर रहा। Right? So if my spiritual master is happy with me, तो अगर मेरे then you should be happy with me. अगर मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे सुखी हैं, तो आपको भी मुझसे सुखी होना चाहिए। You say you have faith, you like Srila Govinda-Swami. आप कह रहे हैं आपको श्रद्धा है, I'm not working on my own. तो मैं स्वयं की इच्छा से काम नहीं कर रहा। He asked me to do like this. उन्होंने मुझसे ऐसा करने He को gave कहा me है। instructions how to do, how to preach. और उन्होंने मुझे आदेश दिया है कैसे प्रचार करना है, क्या प्रचार करना है। So if he's happy with me, you should be happy with me. तो अगर वो मुझसे सुखी हैं, तो आपको भी मुझसे सुखी होना चाहिए। And if I make some little mistake, don't take it so seriously. और अगर मैं कोई छोटी गलती करता हूँ, तो उसको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिएगा। Be positive, man. You know? थोड़ी सकारात्मक सोचिए। थोड़ा सकारात्मक सोच रखिए। Krishna is making you say these things, you know. कृष्णा मुझसे ये बातें कोई बात नहीं। Explain it to you, you know. मैं आपको ये समझा नहीं सकता कैसे। You cannot think this stuff up. ये सब चीज आप सोच के नहीं बना सकते। It's automatic. ये अपने आप ही होता है। But it has a lot of meaning. इसके अंदर बहुत प्यारा गहरा अर्थ है। So all of this is the whole solution is there, right? यहाँ पूरा समाधान मौजूद है। But if we don't know we need the solution, then why will you take the solution? लेकिन अगर हमें पता नहीं हमें समाधान की जरूरत है, तो आप समाधान लेंगे क्यों? So acharyas, they're always explaining what is the reality of material condition life and how we're suffering on this platform. They all explain that. आचार्य हमेशा ये सिखाने का बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम अपनी बद्ध अवस्था भौतिक जीवन में दुख और कष्ट पा रहे हैं। Even you are expressing in your family life, in the neighborhood, in the family, right? There's so much suffering is there. यहाँ तक कि आप भी बता रहे थे आपके पारिवारिक जीवनों में, आस पड़ोस में आप कितने दुख और कष्ट पा रहे थे, आदि भौतिक कष्ट पा रहे थे। Misery, anxiety, disturbance by other living entities. कष्ट, चिंताएं, परेशानियां दूसरी जीवात्माओं से आपको मिल रही हैं। Very disturbing. बहुत परेशान कर रहा है। Because people are envious, they're jealous, they, not good qualities, they cause suffering, anxiety for you. क्योंकि लोग ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और आपके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करते हैं। It's a prison house. क्योंकि ये कारागार है। So when you go in the prison house, you don't expect the prisoners all to be like perfect gentlemen and ladies, right? तो आप कारागार में जाते हैं, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सारे कैदी आपके साथ एक भद्र महिला या पुरुष की तरह व्यवहार That would be करें। an unrealistic expectation. तो आप सही अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। It's a prison house. ये कारागार है। So do we realize we're in the prison house? तो क्या हम अनुभव कर पा रहे हैं कि हम कारागार में हैं? Right? If you keep painting the picture of the reality of the prison house, then you'll be like, yeah, this is horrible. Better get out of here. अगर बार-बार हमें ये तस्वीर दिखाई जाएगी कि भौतिक जगत की सच्चाई क्या है, तो हम सोचेंगे कि कैसे हम यहाँ से बाहर निकल सकते So हैं। as Krishna and Krishna devotees are painting the reality of the situation, you can't say, Krishna, Vaishnava, Sadhu, Guru, Vaishnava, don't be negative. तो अगर कृष्णा Don't साधु point out all of these faults. वैष्णव अगर हमें ये सारी तस्वीर वालों बताने का प्रयास करे, तो आप ये नहीं कह सकते कृष्णा हमें ये सब प्रचार करने की जरूरत नहीं है। Be positive. थोड़ा Why सकारात्मक are you सोचिए। looking at the negative? क्यों नकारात्मक चीजों के बारे में सोच रहे हैं? Why are they pointing it out? क्यों वो इन बातों को दिखा रहे हैं? Because we're not realizing what it is क्योंकि हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि ये दुख क्या and है what our suffering is on this platform. We're not
we're not totally understanding that. और उस स्तर में हम क्या दुख पा रहे हैं, हम पूरी तरह से इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। And because of that, we're not so eager to take the solution. और इसी कारण से हम ज़्यादा उत्सुक नहीं है समाधान को लेने के लिए। Because we think I'm reasonably alright. क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं कि हम ठीक ठाक हैं। I'm alright, not suffering that bad. मैं ठीक ठाक हूँ, मैं उतना दुख में When it's intolerable, और जब हम सहन नहीं कर and you पाएंगे realize it, और जब आप उसका and you अनुभव कर can't पाएंगे live one more second, और आप एक और क्षण रुक नहीं पाएंगे, then we're going to surrender. तब हम शरणागत करेंगे। Not before that. उससे पहले हम नहीं करेंगे। Does that help you? कैसे आपकी मदद हुई? We're getting there. हम पहुँच रहे हैं। We're having a conversation. हम एक वार्तालाप कर रहे Right? हैं। He took off the MMA gloves. अब इन्होंने अपने जो है No बॉक्सिंग more के ग्लव्स punching, हटा no लिए। more fighting. Now we're just amongst friends. We're having a conversation. अब और मुक्केबाजी नहीं होगी, अब हम जो है मित्र की तरह बात करेंगे। We're working it out. तो हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। Right? That's what rational human beings do. They just work it out. तो इस तरह से सही मनुष्य इस तरह से वो चीजों को सही परिस्थिति में लाने का प्रयास करते हैं। No rush. कोई जल्दबाजी नहीं, Did it, slowly. धीरे-धीरे, Gradually. धीरे-धीरे। All right? ठीक है? All right, I better stop while I'm ahead. बेहतर होगा मैं रुक I don't जाऊँ, want to get in more बहुत ज़्यादा trouble. मैं और मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता हूँ। If I keep going, I'm going to get in trouble. लेकिन मैं जितना ज़्यादा आगे जाता रहूँ, मैं मुसीबत में पड़ता जाता हूँ। What's your problem? आपका क्या समस्या है? Yeah, you back there against the wall. पीछे जो दीवार के सामने से बैठे हैं। Yeah, give him that microphone. उनको दीजिए। Let's find out what's going on in his head. चलिए देखते हैं उनके सर में क्या चल रहा है। Yeah, let's go. You want to fight too? क्या आप भी लड़ना चाहते हैं? No? नहीं, I like to fight. मुझे लड़ना पसंद है। My Gurudev told me that. मेरे गुरुदेव ने ये बात कही। You're a Kshatriya. तुम क्षत्रिय हो, Because Kshatriyas, they like to fight. ये क्षत्रिय को लड़ना पसंद होता है। So he saw you have that quality, you like to fight. क्योंकि उन्होंने देखा कि आपके अंदर क्षत्रिय गुण है, आपको लड़ना पसंद है। Then he told me, now go fight. मैंने कहा आप जाओ लड़ो। Great. बढ़िया है। Then I'm just swinging, I'm just fighting it. और उसके बाद मैंने हाथ पैर चलाना शुरू किया, सबसे लड़ना शुरू किया। But of course you can't do it physically. अवश्य हम उसको जो है ऐसे शारीरिक रूप से नहीं कर रहे हैं। I'd like to sometimes, but कई बार मुझे अच्छा लगता है। we gave up those bad habits. लेकिन वो बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। Now we have to do it philosophically. अब हम सैद्धांतिक रूप से लड़ाई करते हैं। Sometimes not as fun, but anyway, that's another topic. कभी-कभी उतना मजेदार नहीं होता, लेकिन वो अलग विषय है। If I make a joke, I have to be careful because people like say, why did he say that? अगर जब मजाक करूँ तो मुझे थोड़ा सावधान होना पड़ता है, लेकिन लोग सोचने लगते हैं इन्होंने ऐसा बात What is क्यों the कहा? hidden message behind उसके why पीछे का he said छुपा that? संदेश क्या देना चाहते थे? And then they're like gone for like the next hour, और एक घंटा तक उसी के बारे में सोचते रहते So हैं। I'm a little bit, I have to be careful with some jokes because you just, what does that mean? मुझे सावधान होना पड़ता है मैं किस तरह का मजाक करूँ। Why did he सोचने just लगते say हैं that? कि वो इस तरह का मजाक क्यों कर रहे Is there some hidden message in all of that? हैं? मजाक के पीछे कोई Is there छुपा हुआ something संदेश he's था trying to tell us? कि वो कुछ छुप के हमें बताने का प्रयास कर रहे थे उसमें। और फिर हम उड़ जाते हैं। Rocket ride, not the रॉकेट में straight जाके उड़ जाते हैं। take off. So, Hare Krishna, should I go ahead? Guru Bala. गुरु वाला ये। I'm like pouring it all out, right? I'm like, so what do you think? मैं मुझे शक्ति लगा तो कह रहा हूँ बाहर निकलिए क्या है आपके सर के अंदर That's my reciprocation, ये वो मुझे दे रहे हैं I give him like a whole feast, right? And he gives me back the plate, मैं इनको पूरा पीस खिलाया और मुझे खाली प्लेट थमा रहा है Maharaj, can you wash this for us? मेरे महाराज क्या धो देंगे मेरे लिए हाँ ठीक है धो देते हैं I need some mercy. मुझे तो कृपा चाहिए I'll wash it. मैं आपके लिए धो दूंगा That was great, Maharaj. Thank you. Can you wash this for me too? बहुत अच्छा था क्या आप धो देंगे महाराज I'll be happy. मुझे बहुत खुशी होगी Too sarcastic. I'm really sorry. मैं बहुत ज़्यादा बयान करता हूँ मुझे क्षमा कीजिएगा
It's a bad habit. ये मेरी बुरी आदत है, I'm working on it. मैं इस पे काम कर रहा हूँ। All right, let's think about it. चलिए इसके बारे में सोचते हैं। Because this is like, you know, this is like he needs brain surgery right now. You know what I मैंने mean? उनको जो ब्रेन सर्जरी करना है, This is not going to be like some light, you know, quick question and answer. You know? ये कोई तुरंत प्रश्न उत्तर नहीं होगा। He needs like a. उनका जो है पहले सर तोड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। And heart surgery at the same time. और उसी के साथ साथ हृदय का भी सर्जरी करना होगा। Breaking the coconut. नारियल तोड़ना है, नीचे से That's going to be a whole nother complicated job. बहुत ही जटिल काम नौकरी है मेरा। Let's let everyone go have a nice rest. इसलिए सब लोग अच्छे से आराम कीजिए आज। You know, dream about Krishna. कृष्णा के बारे में सपने देखिएगा। No heavy lashes. कोई भारी मार नहीं। Right? The last thing you say shouldn't be heavy lashes. Right? आखिरी चीज़ जो मुझे कहनी चाहिए तो भारी मार नहीं। So let's leave you with a positive message. तो चलिए एक सकारात्मक संदेश की बात करते हैं। No negativity. कोई नकारात्मक चीजें नहीं। All right? He likes that. He's smiling. अब उनको पसंद आ रहा है। You see, I listened to you the other night. पिछली रात मैंने I आपको came सुना prepared. I had all Mahaprabhu's instructions to Srila Rupa Goswami. और मैंने तैयार किया महाप्रभु के सारे निर्देश जो उन्होंने रूप गोस्वामी को दिए I listened to you. और मैंने आपकी बात सुनी। Don't think I didn't listen to you. ये मत सोचिए कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी। All right? ठीक है। All right, we'll talk about it later. और हम और बाकी बातें बाद में करेंगे। Deva, good luck. देवा आपको शुभकामनाएं। I hope you have a nice conversation with your wife, your bride. और मुझे उम्मीद है आप अच्छे चर्चा कर पाएंगे अपनी पत्नी के साथ। What did you think? आप क्या सोचते हैं? Was it all right? क्या सब ठीक था? Progress, man. थोड़ा प्रगति कीजिए, आगे बढ़िए। Pray for the power of tolerance सहन शक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए and patience, you know. धैर्य के लिए भी। Thank you for the reciprocation, you know. धन्यवाद आपने मुझे जो Then I realized I'm just preaching to myself, you know. मैं तो क्या खुद को ही यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। Oh, Krishna. Anyway, it's been a very interesting evening with all of you. बहुत ही विशेष दिलचस्प शाम It's रही आज always की। fun, entertaining. हमेशा मजा आता है और We मनोरंजन talked होता about the है। snake हमने सांप के बारे में बात की with the teeth knocked out. जिसके लिए दांत तोड़े गए। I'm asking him last night on the way back, you know, how are those veggie burgers, you know, and he's got like no teeth, you know. I'm asking the guy, how do you enjoy the veggie burgers, you know. कल मैं इनको पूछ रहा था आपको बर्गर का आनंद कैसा मिला? उस व्यक्ति के दांत ही नहीं है मुंह में। And I didn't think about it. I said, oh, he doesn't have many teeth. How is he going to enjoy the veggie burger? और मैंने ये बात सोची इनके पास दांत ही नहीं है, बर्गर का आनंद कैसे लेंगे? Then when it came out, I was like, oh my God, you know. और जब मैंने ये बोल दिया मैं हे भगवान मैंने क्या बोल दिया? Like, you know, how I asked him this question. इनको मैंने सवाल ऐसा क्यों पूछा? And he said, I'm just like a snake, you know. और मैंने कहा मैं एक सांप के जैसा हूँ। Like an anaconda, you know. Just inhales it, you know. जैसे अजगर होता है बस निकल जाता है। And you can see like there's no chewing, just like the whole thing. All I can see is just veggie burgers. Like in the middle of the chest, you know. वो चबाता नहीं है पूरा जो बर्गर निकल जाता है वो। It's like I just inhaled it, you know. जैसे वो पूरा अंदर डाल देता है। Like a snake, you know. जैसे सांप। Why I asked him this question? क्यों मैंने उनको ये सवाल किया? It's like naming your blind son Padmalochan. जैसे किसी का बेटा अंधा है उसका नाम दिया है पद्मलोचन। It's like a not fitting, old lotus-eyed one. फिट नहीं बैठ रहा है कि कमल के जैसे आंखों वाले और वो बच्चा अंधा है।
lotus eyes. कमल आंखों वाले. Poor guy. It's like, what's your name? Padma-lochana. वो अंधे को पूछेंगे आपका नाम क्या है? पद्मलोचन. Your mother blind or something? क्या आपकी माँ अंधी है क्या? She's just trying to be positive, you know. वो सकारात्मक होने का प्रयास कर रहा है. You can look at it negatively or positively. You क्या know? सकारात्मक की तरफ देखेंगे या नकारात्मक की तरफ? You see, I'm trying to be positive. आप देखिए मैं सकारात्मक होने का प्रयास कर रहा हूँ. And you're smiling, that's a good sign. और आप मुस्कुरा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है. Thank you, everybody. धन्यवाद सभी का. Shri Gurnitai ki, Srila Prabhupada ki, Srila Govinda-Swami, Srila Gurudev ki, Samaveda Bhaktivedanta ki, Gaur Hare Krishna. How could I ask him that question? क्यों मैंने उनका सवाल पूछा? How did he first answer it before the snake came out? कैसे उन्होंने पहले उत्तर दिया था सांप वाली बात से आने से पहले? Anyway, everyone got the point. What What did he say first? I swallowed you. Oh yeah.